कल शाम को रात को इतनी प्यारी मार्केट चली। वो एक्सपेक्टेड लो से मैंने ले लिया था, एक्सपेक्टेड लो आ गई थी, 9 बजे ही आ गई थी 19,140 तक। सवा घंटा गार्डनर में फंस के यहाँ पर आया। गार्डनर में मेरी ज्यूरी ड्यूटी है ना। अच्छा, मेरे को लगा आज है, कल से लेकर अगले 5 दिन तक। चलो, किस केस का पता है कि क्या होगा? नहीं कुछ, they don't tell you anything. अच्छा, कल शाम को ट्रेड करने इसलिए बैठा कि यार ड्यूटी में जा रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। ऊपर वाले ने ऐसी मदद करी तो That's good. That's good. आप गाड़ी इधर खड़ी करते हैं ना, मैंने कहा शायद किसी और गाड़ी में आए हैं आप तो। Okay. $20.19 $5.85 $19.140 $20.19
गुड मॉर्निंग जी। ठीक ठाक जी, आप सुनाओ। न्यू स्टूडेंट है तो इधर आ जाइएगा। अब न्यू है ना तो फिर इधर आ जाइएगा, राइट साइड पे इजी हो जाता है, वरना मुझे बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है। So old and new. So We are actually happy to hear from you. no problem. First come first. Good morning जी, आ जाइए anywhere. हाँ जी हाँ जी। Good morning, Vikram. हाँ जी, क्या बात, कल जो बोला था ना, कल तो एक वीडियो का देखा था ना, तो जिसे आपके हमने कल दिखाया था वो बाय आज का बाय बेड दिख नहीं रहा था, उसके दो पुराने वाला जो निंजा 7 वाला चक्कर था ना, हाँ वही ना सिस्टम नहीं, लेकिन आपने चार्ट ट्रेडर ऑन करना है, उसके बगैर तो नहीं आएगा। तो ये देखिए ना, ये वीडियो पे ये गए, ये लिखा है चार्ट ट्रेडर। जब तक वो नहीं आएगा तो ये चीज नहीं दिखेगी। वो तो ऑटोमेटिकली आ रहा है ना, आप जब उसको लॉन्च करते हो उसमें आपका ये आ रहा है कि तो दिखाता हूँ खोल के लैपटॉप में, क्योंकि आप चार्ट ट्रेडर आपको जरूर सिमुलेशन पे जा रहे हो या फिर आप डजंट ट्रेडिंग मैटर। हाँ, तो आप सिमुलेशन में जाएंगे। हाँ तो उसके अंदर भी वो आता है, डिफरेंट ही होता है। नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और क्या रहा भाई, कितना बढ़िया बढ़िया, दूसरा क्या चल रहा है? कमिटेड नहीं कट रहे, ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड न्यूज़। कंप्लेंट भी कर रहे हो? हाँ, दैट्स अमेजिंग। नहीं नहीं, नॉर्मल तो नहीं है। ओके भाई भाई हाँ, तो सिमुलेशन पे क्लिक करें। कितना टाइम हो गया ना पढ़ने के लिए। कल मैं वो सर नोट्स पढ़ा था ना आपके, वो वीडियो देखा था, स्कूल में तो आंखें बंद हो जा रही है। It can be boring if you ये देखिए यहाँ से प्लग कनेक्टेड है, यहाँ लगा दें। हाँ जी, ठीक है। ये देखिए ना, इधर ऊपर जाएंगे, माउस आपका जब स्टार्ट हो जाएगा ये भी लोड हो रहा है। ये गया ना, एक सेकंड, चार्ट ये भी लोडिंग में आ गया, चीजें लोड हो रही। ये लिखा हुआ है, ये चार्ट ट्रेडर। ठीक है, अब आएगा ना, फिर आप अकाउंट को पिक करोगे। मैं नहीं पर्सनली डॉम से ट्रेड करता, चार्ट से करता हूँ। तो अगर प्राइस लाइन, अभी ये सारा लोड हो जाएगा, तो प्राइस लाइन से ऊपर क्या होगा, प्राइस लाइन से नीचे क्या होगा, तो ये सारी चीजें। क्योंकि मैंने कल ट्रेड तो नहीं ली, बिल्कुल सिमुलेशन में नहीं ली मैंने, बल्कि मैंने वो ना कल वो क्या बता था, लगा चलो देखते हैं। हाँ, बाय सेल, यस। वो हो गया ठीक। हाँ, वो काफी बेहतर है। चार्ट ट्रेडर नहीं ऑन कर रहे थे। आपने वीडियो जो बनाई हुई है, वेरी डिटेल्ड, थोड़ा थोड़ा NSH is night session high and NSL is night session low. लो, correct.
कल मार्केट काफी नीचे गई। सर ऑल टाइम लो आज, ऑल टाइम लो, क्रेजी। ऑल टाइम मीन के पिछले 3 हफ्ते में 200 पॉइंट तो कल ऑलमोस्ट 150 पॉइंट वो ईएस कर गए, एंड वी केम वेरी क्लोज टू हॉल्टिंग ट्रेडिंग, मीनिंग के ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है पूरी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में अगर 7% प्राइस गिर जाए, कि अगर पूरी, क्योंकि पूरी दुनिया आके फिर शॉर्ट करना शुरू कर देगी ना, या पूरी दुनिया आके लॉन्ग शुरू कर देगी, तो उनकी एक लिमिट है। एक दिन में अगर प्राइस 7% गिर गई ना, और कल हम 5% पे आ गए थे ऑलमोस्ट, गिरते गिरते ऑलमोस्ट $1000 तो गिरी है नैस्डैक, और $200 ऑलमोस्ट 150 गिरी है ईएस, तो वो वेरी क्लोज 4 o'clock के करीब करीब ना हमें हो रहा था अगर ये गिरती गई तो ट्रेडिंग ना हॉल्ट, तो वो क्या होता है आप बस बाय एंड सेल नहीं कर सकते, तो वो अगले दिन का वेट करते हैं। सो लेट्स सी व्हिच वे टुडे। मेरा ख्याल है कि आज काफी रिकवर कर जानी चाहिए। we'll see which way it goes. It went almost even lower down the extreme low yesterday. हाँ, कल तो एक्सट्रीम लो से नीचे गई थी। So let's see which way it goes today. ये कैसे गया था? ना टॉप पे चार्ट ट्रेडर जो बना हुआ है ना उसको जाके ऑन करें, क्योंकि मैं डॉम से ट्रेडिंग नहीं करता, चार्ट से करता हूँ। उस पे क्या करना है? उस पे क्लिक करें और उसको ऑन कर दें। एक ऑफ होगा, हिडन होगा, ऑन कर दें। चार्ट स्टाइल नहीं, नॉट स्टाइल, ट्रेडिंग, चार्ट ट्रेडिंग, वो एक आइकन बना हुआ। इन्वर्टेड है करो, इसे क्लिक करो, चार्ट पे मिनिमाइज करो, ओके, और उसको वहाँ पुश कर दो। can choose your account from here, demo, set up ATM log from here, chart trading, जहाँ से भी ऑर्डर लिए, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक, जहाँ से भी ऑर्डर लेना है, सेल, इसको करो ऑर्डर again, यहीं से कैंसिल। you can do that, you can do it from here, and mute yourself. Mute yourself. Right. Okay? All right, okay, thank you. Micro? Yeah. Micro. One lot. One lot. Micro. Exactly. और कल रात को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। एरिया नहीं दिखा या ऐसा वही है, कोई चेंज नहीं है। 30-20 यार मेरा स्टॉक लॉस आप करो तो ये प्लान करें। हाँ, देखो
दो बार तीन फिर से ट्रेड होगी। मैं नहीं करता, मैं जानना चाहूँगा। देखो मैं ये देखता हूँ कि अगर उसको $20 देखिए 4 उसके बाद फिर आराम से करम करके बैठे ये Sorry. ये माइक्रो में ऐसा 2.5 घंटे कल शाम मेरे को लगा कि मेरे को आज जाना है ड्यूटी के लिए चल जा। तो मैं को लगा यार मैं टेंशन करूं ये कल शाम का बैंगलोर मत करो, बैंगलोर में जल्दी करिए, बैंगलोर में आप पैनिक करो। All right, areas are updated. Areas are updated. areas are updated. Super areas. सुपर एरियाज में लेटेस्ट आज के नंबर्स कंप्यूटर ने अपडेट हो गए। और आपको लग रहा है कि वो नीचे आ रहा है, दिखाती नहीं है वो नीचे जा रही है। तो अगर $20 दिखा के 18 पे सुपर एरियाज में लॉग इन करके तो नीचे आएंगे, टैब्स बनी होगी, मॉर्निंग एरियाज। Monthly area, morning area, ये जो blue से कलर है, right? यस Why is it different from Friday? Friday we don't give all markets, only like 5 markets. It's a short day trading, so When say like a base is low, pressure is low, what is that? more chances price will go down, more chances. But will it change? Possibly not. Like now, I think even though pressure is down, price should go up. It has fallen ridiculously low. But each day we're making a newer low, so मैं तो 20 रखता हूँ क्योंकि आपका 19 टिक्स उधर और 34 टिक्स है बड़ा, वही है ना, उसका 19 टिक्स है तो 20 रखता हूँ क्योंकि जब तक 4.75 का स्टॉप लॉस ही होगा ना अगली ब्लैक कैंडल तक, और 30-20 में वो 34 टिक्स है। हाँ जिधर मर्जी, हाँ लेकिन या उस चार्ट के हिसाब से करें या उस चार्ट के हिसाब से, दोनों। मैं टीपी एटलीस्ट 8 टिक्स रखता हूँ मिनिमम, 8 के बाद ब्रेक इवन हो जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर अगर ट्रेल शुरू हो गया तो 8 टिक्स निकल आते हैं, और छोटे चार्ट में 4 टिक्स 1 पॉइंट निकल आता है। 34 टिक्स था, अगली ब्लैक कैंडल जब तक नहीं आएगी, बट हाँ 19 टिक्स। सर वो फिर खुद कटोगे क्योंकि उस ब्लैक कैंडल तक तुसी ट्रेड दे विच लीगली रहना है, क्योंकि देखो उस ट्रेड दा रूल है ना। यस यस, because next black candle will only form until 19 ticks. हाँ है MES, yes yes।
Today is March 11.1. इसमें dates March 25 लिखा हुआ है. नहीं, हम जो कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हैं 2025 का मार्च का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, ऊपर जो राइट पे डेट है वो एक्चुअल डेट है. ओके, मार्च 2025 हाँ, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की तरफ जा रहा है. मार्च 25 मार्च 25 नहीं नहीं नहीं, ऊपर टॉप राइट पे डेट है. ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 30 ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਹੋਣਾ ਉਹ 10 ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ 10 8 तक ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ. 8 क्योंकि 2 पॉइंट मिल गए तो एटलीस्ट ट्रेड ਤੇ लॉस नहीं होएगा ना. कई बारी 8 तक तो बाद निकल जाती है ट्रेल. 8 तो बाद 1 पॉइंट ट्रेल कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो. ये 8 तक 2 पॉइंट निकल आते. 8 ticks, 30, 20, 4 ticks, 15, 10 generally is okay. Mid band is a little better to trail. Mid band is better to trail, but this black candle is really good for 4 ticks or 8 ticks. है? अगर आप लगाना चाहें तो वो उसका उससे ताल्लुक नहीं है. So right now price is between R1 and S1. That's the current. See, the thing is, ये दिख रहा है ना? हाँ, मेरे कितने 88 ट्रेड्स हो गए. मार्केट बड़ी वॉलेटाइल थी, जिसमें दूसरा था मुझे कैसा लगा. पर माइक्रो में हो जाएगा. तो मेरा पता लग गया इंसान के मेरे को शाम को मुझे पता है कि टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं करने बैठ गया. अब मैं हर रोज सोचूंगा कि यही करनी है. और उससे 1 घंटा पहले मैंने मुकेश को बोला था मैं शाम को ट्रेड नहीं करता यार, तू ऐसा करता और शाम को ट्रेड कर रहा हूँ. माइक्रो में लो, वन माइक्रो. Let's see if it bounces from S1 right now. Let's see. Good morning, ji. करना पड़ेगा. And the markets are really slow. Actually, this is the second time in my life I've traded in this. Maybe I'm trading it. क्या सुनिए? मार्केट इफ टच नहीं करना, मार्केट नहीं करना. इसमें बाय लिमिट है. बाय लिमिट लिमिट इज नो नो बाय लिमिट इज बिलो द प्राइस. बिलो द प्राइस और बाय स्टॉप इज अबव द प्राइस. तो इसमें राइट करके बाय स्टॉप नहीं आ रहा क्योंकि वो प्राइस ऊपर जाए ना, व्हाइट लाइन के ऊपर जाएंगे तो आएगा ना. आपने जो प्लेस ऑर्डर उससे नीचे है तो वो दिखाएगा ही नहीं. यस यस, बाय लिमिट या सेल स्टॉप, क्योंकि वो लाइन बाय लिमिट यस, बिकॉज वो कर्सर से नीचे है ना लाइन से.
Let's see if it pulls today at least 100 points back. We have no idea, but we'll go with the flow. I was able to trade Nasdaq areas last night. It came 9 o'clock. Exactly, Peter said 950, sorry, 150. It went to 140 and then shot back up 200 points. 200 points. From 140, it went to 440. 300 points. So, expected low. Evening के एरिया है ना, इवनिंग के एरिया आ गए 7:15 बजे. मैंने खोल के देखा, मैं कहा यार ये तो प्राइस गिर गई है, तो मैंने अपना ऑर्डर 150 पे लगाया और 150 से वो 450 पे गया. वही 15 पॉइंट और 35 पॉइंट. हाँ, तो कोई चेंज नहीं. नहीं कंप्यूटर सर वो मैनुअल वेबसाइट पे आ जाए. हाँ, मैनुअल आ जाए. I think price should go to expected high today. Should. My opinion could be wrong, but by the time it has been dropping 2,000 points, almost crazy. So yeah, so 220 would be approximately a good. Sir, high to go low, at least expected high, at least. If I go, let's see, I wouldn't take S1, it's too close. So S2, at least S2. From R1 to S2 is okay. So if you want to Take the ideal is from high to low. Yeah, or low to high. So if it gets to expected low, I will buy. If it goes to expected high, I will sell against the trend. Because right at that time, everything will be green. In expected high, I will short. If it goes to expected low, everything will be red, but I'll go long. Because that's working as a support and resistance trade. But why do you not think that S1 is S1 will Because S1 could work, but these days market is so volatile that you can hit your stop loss on S1, right? So, and we still have half an hour to see which way market. It is inside the value. It came outside of the value area. So all those numbers are critical for us to watch. Where price, how high can it go, how low. Now we have night session high, now we have night session low. We have the value area. These four are really important. So night high, night low, value high, value low. So that's where these are some support and resistance numbers. So it varied almost 100 points. Yeah, big. Because last night it went to 5557. That's how low ES went. So 5557, and then it went as high as 5651, right? That's almost 94 point swing on ES last night. So let me just get on and do a quick. All right, good morning, everybody. Tuesday, March 11th, 9 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. First mid-band is already done at 9 o'clock on ES. Price came from a lower low and it's going down. Both charts are magenta. So first mid-band trade is done. Anyway, we'll wait for the market open. Please don't trade at 10 o'clock. Please, job openings, high impact. So 9:59, we're going to halt trading and then we'll start trading again at 10:05, 10:10. Let's see, because JOLTS opening is a crazy news. We have no idea which way are they gonna take. So however, we'll go along with the plan. Market yesterday fell almost 5%, 4.5% on Nasdaq,
and ES 150 points it fell. So all the stocks were hammered, and so if I was to take Nasdaq, where would I go? Nasdaq at least S2, or depending on a 930 with the S2, I will think about S2 and ES. Maybe S1. No, S1 is too close right now. New candle, 9 o'clock is opening and it is still going down. So price went as high as, so let's look at Nasdaq. Nasdaq price went from 19,140 to 19,585. So last night we had a swing back up to 445 points and 94 points. So 450 divided by 95, yeah, almost 5. The range is from 5 to 7 for these Nasdaq to ES. So Nasdaq right now is where is it? 19,450. So very close to pivot point. So between R1 and S1, we have no idea. Right in the center right now. Yesterday we had no green candle to the upside at all. Like meaning the whole day there was just pressure. Everything was down. Today, pressure is showing down, base is showing down. If the base is down, what does that mean? Price is opening below the pivot point, PP below. So more chances are it can go and touch night session low. More chances are. Will it? We don't know. If the base is up, that means more chances are it will test night session high. So that's where the base comes from. Pressure means more volume should go towards down. But let's see if they. So today is maybe since February 18th, it's been just going one way down. So February 18th, we were at 22,200 on February 18th Nasdaq, right? And today we are at like 19,140. So kind of a ridiculous move, if you ask me. Tesla was down to $222. Let's see. So see, right now, pre-market open, Amazon is showing down, Apple is showing down, Meta is showing down. So we can already, because the stock trading before market opens, there are some orders getting executed. So that's why the price is dropping, right? So all NVIDIA is down 1 cent. So let's see which way it wants to go. Biggest hit was Tesla yesterday, $40 down one day, $40 down. So $222 now Tesla is trading, and they have lost almost almost a trillion. Now it's down to 700 billion, the company value, and what it was at 1.5 trillion. You know that this is how money is gone from one pocket to another pocket, right? So anybody who bought it, a retail investor, without doing a due diligence that it will go up, hey. So anyway, we go with futures market wherever trend takes us. Forget about long-term, short-term. 30-20 is in a divergence right now. You have divergence mean price made lower lows, strength did not go. So that would be in your video number 4 for Daniel. Oh, no. So that's an advanced topic of divergence, meaning trend may change. From 30-20 may go into green soon. Because it's a number of ticks. So we're taking an entry on 15-10, but we are watching 30-20 for confirmation. So it's just you see a white line just came. Just number of ticks. 10 ticks, 20 ticks. And
नहीं तो वो टाइम उसका ऑफसेट है, सो 10 and 20 ज्यादा क्रिटिकल है. 10 ticks 20 ticks नंबर ऑफ ticks इन ए बार. कैंडल बड़ी है ना, तो बड़ी कैंडल 20 की है, छोटी कैंडल 10 की है. नंबर ऑफ ticks 15-10 15-10. Yes, so we are watching 15-10 for entry and 30-20 mostly for confirmation. Yeah, that, hey, is the trend green? Trend green. Trend red? Trend red. That's it. Valid है सर. अभी तो कोई हिट नहीं हुआ, मिडिल में है. ES is more towards S1. Nasdaq is again S1, R1. Both are synced today. Both are fine. Should be okay. Both are higher highs. Large triggers are green, so it should pull back up. So to take that gap trade, would this be the right time on this one? Yeah, it's already done. You should have placed your order at a mid-band. Now it got picked up, right? So now one of two things will happen. If the color changes, exit the trade. So you can hold the trade until 8.5. You see 6.5. There's a number beside it. 6.5. On 1510, there's a number 5620. 6.5. There's a number going between. 5620. Yeah, that means 7. Okay. So 8.5. Until then, you can hold the trade. That's a black candle on the 30-20. Nahi sir, abhi lagta. Okay, 7.75. So anybody who's took a mid-band trade generally can hold it until 8.5. 5 minus. I'll give you the exact math. It generally the exact math is, what's the price you see on higher high? 5626, right? 0.5 minus 8.5. That's where your stop loss is. If it goes 3 more ticks, it should hit a stop loss from here. So right now it retraced from Fibonacci boxes. So let's see. Fibonacci boxes are Those blue ones. So right now it bounced from the green Fibonacci box. Only thing I just realized, this wasn't green yet. 30-20 wasn't green. Large triggers were green, but the trend wasn't. There you go, 8. Still not confirmed. 2 more ticks and would have taken your stop loss. $8.25 done. Stop loss got hit. नहीं बंद कर दें क्योंकि और ज़्यादा नहीं रहना लॉस. हाँ वो हो गई ना, पास हुई, लेकिन ट्रेंड नहीं चेंज हुआ. ये डाइवर्जेंस का ट्रू होता है कि इसको ग्रीन में जाना चाहिए था. अगर नीचे जाना है तो अभी 2 ब्लू आ गए ना, 2 ब्लू आएगा, लोअर हाई 30-20 पे आएगा तो, या 15-10 पे तो हम नीचे जाएंगे. But because right now things are in between, I'm not taking any SRES trade. Those are more effective if you're near the borders. Let's say you are at S3 and you want to go up. You wait for the first higher low and then go up. If you are near S3, R3, and you want to go down, you will wait for the first lower high to go down, right? So that's more effective. Yesterday, right now, it could change anything at 9:30 because it's between R1 and S1. It may go touch R1, may go touch. So I don't know what the market trend will get established, right? So आपने वीडियो वाली देखी, वीडियो देखी? अच्छा, निंजा वाली, ठीक है, नो प्रॉब्लम.
नहीं लेक्चर तो हो गए इनके, उनकी अब वो जो वीडियो चल रही है। ऊपर ये में जाके जो आपकी फर्स्ट जो वीडियो हाउ टू यूज निंजा ट्रेडर। निंजा ट्रेडर में आपका जो यूट्यूब पे जो था, हाँ हाँ पहला वीडियो में ठीक है ठीक है। 5 घंटे का था। आपको 1 मंथ लगेगा एटलीस्ट बेसिक समझने में, नॉर्मल बेसिक। You are saying कि वो जो gap trade था, that was नहीं not नहीं a right gap trade, but because 30-20 में वो अभी भी वो रेड था तो कंफर्मेशन नहीं आई थी। confirmation. If it was also, if it had also turned green, ग्रीन देन वी हैड मोर चांसेस ऑफ द पिक होता और ऊपर जाता। The 9:30 traders, because remember, all of you guys are watching demo trades, right? The real trades happen with the real money who are outside $1 trillion trading, right? So, But we are saying this is a real account, right? So yeah. Trade it like a. I'm just trying to keep this in mind. And what was the mistake that I've done? No, only one chart was green. The other one was. Yeah. Theoretically, you didn't do anything wrong. We just should have waited for the chart to turn green on 30-20 as well for that mid-band. Right now, it is going down. I wouldn't take that sell because price should come from a lower low. So the theory is it has to come from a lower low or higher high. If you're buying, it has to come from a higher high. It's still at higher low. Yeah, so I'm not taking a Once it comes down to lower low, then yes, then that mid-band becomes more effective. For example, lower low there are 56 तो वो तो बंद हो के आगे All right, guys, another 10 seconds to do this. That way we got our mind out of the trading and into the. So I bear witness to myself that today I will always check the news. I will always place my stop loss. I will follow my strategy and not trade randomly. I will treat today as my first trading day. I will stay disciplined. And I'll do what I see, not what I think. Thank you very much. Enjoy. So. So let's. Now the mind is clear. Now let's get our
hands and eyes and mind coordination right. हाँ ये प्रोजेक्टर जरा हिल जाता है इसके साथ. That's all. So for yesterday, anybody who is brand new, please practice buy limit, sell stop, buy stop. I want you to get your hands below the white line, buy limit, above the white line, buy stop, below the white line, sell stop, above the white line, sell limit. Please practice these 4 trades. Forget about profit making. Forget about entry. Where am I? I want you, when I say buy limit, what does your mind says? I'm going to go below the white line, and I'm going to do a buy limit. When I say sell limit, what does your mind say? So your hand, eye, mouse coordination, we're gonna get in sync. So that's all your job today is the from yesterday, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, wherever they will end. So when I yell out sell limit, you should know, you shouldn't ask, am I going above the white line, below the white line? So just quick, of course, absolutely. So let's pick a price of 5610. That's the current price. Good morning. So that's the current price. If I want to do in buy or sell, current price, and let me change the. If I want to buy below the current price, it will be a buy limit. If I want to sell above the current price, it will be a sell limit. If I want to buy above it would be a buy stop limit, not market. And these options will change where your cursor is. If the cursor is here, you will not see this sell limit. If the cursor is here, you will see. So just at the white line, you gotta keep practicing. This is your 2 or 3 days. I'll just say put a sell limit. So your mouse cursor should go above the price in that gray area. Make sure chart trader is on. Make sure account is selected. Whether you're doing a right entry, we don't care. I want to get your so sell stop limit. These are the 4 orders we will be again placing for the rest of our lives. Buy limit, sell limit, buy stop. So if there is a price I want to sell, but not now, when it comes in the future. So let's again do it. So let's imagine 5620 here and 56 let's 100. So these would be how the order would be. So I want to sell above my current price. It would be considered a sell limit. So you're only taking either a buy order or a sell order. That's why I put a dividing line in between. Either it would be a buy order or sell order. In green, you will generally do a buy order. In red or magenta, you'll do a sell order, right? So let's see which way it goes right now. If you took that mid-band on sell limit. I've taken now mid-band and I have made 2 points. Perfect. There you go. See? That's how easy. Price has to come from a lower low, sell from it. Both charts are lower low. Your probability is very high. 30-20 red, 15-10 red, put it on a mid-band, take 2 points. So if you are okay here, just keep practicing buy limit, sell limit, buy limits, because you will not get into buy, stop, sell, stop anytime soon. Beginners will just do buy limit, sell limit, buy limit, sell limit. So when both charts are magenta, you're going a sell limit. When both charts are green, you're doing a buy limit. But remember where the white line is. Otherwise, you may not get that option. So if you took a sell limit on this mid-band, no failure whatsoever. So that's our second mid-band after 9 o'clock. First one was, it was coming from a higher high, but large triggers were green, but the background had not changed, right? So that was the only misfire that happened. Was red, right? So what's the value area for today?
It's on 60-minute chart. It should be, you are at 56.90 to 56.30. What is the value? Value area is video number 5. Just saying. It will be there. 30-20 सर एरिया आ जाए फिर वहां से देखेंगे क्योंकि उसका मिड बैंड हो चुका है काइंड ऑफ वो उसी कैंडल के अंदर है ना अभी उसी के तो either you're trailing or you're so let's see but yesterday we were very close to Nasdaq being halted because every stock like New York Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange has a limit. Like what happens, they don't want the thing to go to zero, you know. So there every stock exchange has a limit of 7% on equities. If the market falls 7% or goes up 70%, trading gets halted worldwide because that's their like circuit breakers. They have them in there because what happens is everybody's like, oh my God, I can just take an account and sell. So imagine the whole world comes in selling or buying. So they have a 7% limit and which gets increased. And so exactly at 6 o'clock, that 7% limit resets. But every day we come in with a 7. So yesterday we got to very close to 7, around 5. If it had gone in more, which had happened after the hours. Remember, I think we got yesterday as low as 271 Nasdaq. And from 271, it fell down more to 140 last night. But that happened after hours. So now we have today's limit. So every single day, 7. And I was here long and I saw extreme low. So just imagine how, before Daniel does the lecture, quickly to explain why expected low and extreme low works really well in every market to go opposite. So price, so this is extreme low, right? So imagine there is a price dropping candle by, this is like a spring will act. It's like a spring being crushed. So at extreme low, it just kind of bounced back up to, it pulled my price to S3 at least. So last night here, when the price got to extreme low, we just said we are buying because that spring was so compressed and when it unreleased that power, it just shot back like 40 points on ES in less than 15 minutes. Less. 200. And 200 points on Nasdaq, less than 15 minutes, right? It went from 270 to 470 because that spring was so tight that it just released all the power. So today, let's see what happens. Yes. So basically, it's an index. So, so what we are trading are not 500 stocks. We are trading 500 companies, one value. So this value represents 500 companies. This value represents 100 companies. Out of the 100 here's the problem though with Nasdaq. 92 companies value 10,000. 8 company value 10,000. That's wrong, right? So when those 10 move, 8 move, you have a huge thing to the up or down. So yesterday Tesla lost. Imagine this midband at 924. You're done for the day before even the market opened. So this midband was perfect. Lower lows, both thing. Everything is green. Everything is magenta. You did a sell limit and you're done at 924. Now the price is heading towards S1. Let's see which way today it wants to go. Will it bounce today? No idea, but let me bridge Daniel's mics. Should be okay. YouTube is okay, guys.
When the table moves, audio signal goes, but we are okay. Good morning, guys. Morning. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal. Hello guys, Kim Show. Microphone check. If you can hear me guys, microphone check. Vikas, good morning. Kesh, Joysab, good morning. Anish, Manish, good morning. Shaji, good morning. Saurabh, Rizwan bhai. Jagdeep ji, good morning. Samir, Jamal bhai. Manpreet ji, good morning. Majid, Paresh, bhai, good morning. Hikesh, Gaurav, Clifford G, good morning. Clifford G, hope your new PC running really good. Ashwin Ji, good morning. Rabi, good morning. Arlene, good morning. Sunil Ji, good morning. Ranjit, Akshay, good morning. Prague, everybody, good morning. Quick review for our disclaimer, guys. All material in posting on our web service or our trading floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think. And treat this market the very first day you trade. And all the areas we have on our superareas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000 base is down, pressure is down, 10 o'clock news. Green to go up, red to go down, but tomorrow is extremely important day, and tomorrow is extremely important day for Canadian market as well, because we have interest rate news is coming tomorrow for Canadian, and tomorrow we have US our inflation data is coming. Green to go down, red to go up tomorrow. Tomorrow, green to go down and red to go up. Look like it will be green. Look like it will be green. Meaning red. I mean, inflation is less. Sorry, inflation is less. Less means the red number, and red mean market will go down. We'll see what will happen tomorrow. But overall, this is what is predicted because the forecast is less than previous, so the number will be red. And today, our expected high for S&P 500 is 57.15 to 25. Low is 55.50 to 40. Huge difference. Even in between, you see your expected low and extreme low. Yesterday, 100% all markets went over extreme low, and from extreme low bounced back up. It looked like it's like wild market right now. The tariff war is going on. Even Euro is fighting back with the US. China is fighting back with the US. China bypassed the Europe, and now they're putting an EV plant in Turkey. And that's also a very important factor. If you remember a few weeks ago, I told you guys you'll see a big development from Europe, and this is what's going on. And Nasdaq, our expected high is 19,870 to 19,930, and the low is 19,100 to
over 50. You look at the gap, and even look at yesterday, our Nasdaq 1,147 points swing to the downside. That's a terrible, terrible swing from our, if you see from March 7, March 8, that's a huge push one way, and no retracement. I'm talking about retracement means lower high. There's no lower high. It straight went to our 19,140, 139.25, and then now we got our lower high, and this lower high is not confirmed yet. Remember on the S&P 500, our Nasdaq, this is not lower high. Lower high will be done when we have a black candle to the downside. If we are not getting a black candle to the downside, and okay, low to go up and high to go low, both way. Today will go both way. Low to go up, high to go low, and expected low to go up or hit and run from anywhere. Right now, it hit our S1 area. S&P 500. Nasdaq is a little off, but Nasdaq will go to our S1 area and test S1 area, and very strong support at S1 area. We are in a multi diversions. If you look at the 240, we are multi diversion, and plus if you look at the weekly chart break our midband, green midband, weekly chart break our midband. And we are, what I'm expecting a pushback to test our 5730 area, 5720 area. That's our expected high for the day. And that is our green midband on our weekly chart. Weekly chart creates a retracement diversion, and 608 points pushed to the downside on for 608 points. In 1 month, I'm talking about in just 4 weeks, and 3,310 points and green box is done for Nasdaq. Remember, if you look at the weekly graph, it hit our blue box, and from blue box bounced back up quite a bit points. It bounced back almost 3,000 points from there. 1,500 points, and then 3,010 points. 3,310 points, and exactly reached to 72% of the swing of 4,578 points pushed to the upside on our Nasdaq. Very nice, beautiful calculation. It feels like market is moving by law. Market is moving like it's like the sun and moons are moving. Don't think you don't understand. You understand. The problem is we don't follow, and we are not in the discipline. And right now, Dow is down. Dow just from this morning, I'm talking about 1.5 hour, Dow came down 339 points pushed to the downside. Russell 2000 is down 23 points. Nasdaq is down almost 200 points, 3 tick less. S&P 500 is down 51. Who can imagine just 1.5 hour S&P 500 will be down? It's like I'm looking like I'm having a dream when we have 30 points. I remember 2005, 4, 6, 7, 8, 9, 12 points, 20 points range in a day. And the worst day was 30 points. You're like 30 points, oh my God, market has crashed, or it's a big push to the upside. And now, just 1.5 hour, we have 51 points pushed to the downside. Again, Euro is getting strong, Euro is getting together, and Euro is very strong. And British pound hit our expected high for the day, 100% hit our expected high, 29.50, and the Euro also hit our expected high for the day. So both markets are at our expected high for the day. And tomorrow we'll see our Canadian dollar will go down tomorrow. Why? Because they are about to cut the interest rate. And if they're cutting the interest rate, definitely we'll see a push to the downside on our Canadian dollar. So Canadian dollar right now sitting at PP, above value area, magenta midband. Everything is magenta on 60-minute chart. Crude oil yesterday went to our expected low for the day. Beautiful push, $2.31. We knew that crude oil very close to expected high, 67, $61,
it was a lower high after a higher low, lower high black ended to the downside, straight went to our expected low 65.29, and from 65.29 bounce back up 72%, $1.67 right now. If euro was strong, so whole night, if you look at the FDAX, first push to the upside, lower low, lower high, hit magenta midband, and right now base is down, pressure is down for our FDAX, and FDAX is it just fell up the value area very nicely. It was above the value area and just fell up the value area to the downside. Gold is up, gold is pushing up, base is up, pressure is up, expected high is expected. Somewhere 29, 27, 28, 30, 31. That's our expected high for the day for our gold. Copper, if gold is up, copper, silver definitely will go up, and copper at our expected high. And copper already bounced back from our expected high, and again right now heading towards our expected high. Remember, gold is above value area. Gold is above our R1 area, so expected high is just slightly above R1 area. So we'll see our expected high will be done very soon. And silver done 100% at our, and silver is screaming to the upside. Very strong push, 95 cents. That's a crazy push to the upside. $93 or 93 cents push to the downside yesterday, and today it just covered up and gave us a higher high from yesterday. And it's just pushing up, and gold very soon we'll see our expected high for the day is done for the gold. And natural gas, if you remember, it was open with a gap, and right now just retracement, 16 cents retracement to the upside for our natural gas at PP area. Not much movement, but it's still pushing up. Bitcoin, if you remember, I was keep telling 70,000 from 76 something, right now 76,735 low, bounce back up 57. Everything is crazy now. If you see very tiny retracements are 5,000, 6,000. I remember Bitcoin price was $10, even 10 cents. I'm talking about December 2009, 10, 11, 12. All old people know when we will deal it here, and it was crazy, and people were dealing with 10 Bitcoin, 20 Bitcoin, 30 Bitcoin, 50 Bitcoin, and now nobody even can imagine Bitcoin price went above 100,000 US. Ethereum, same thing, $209 push to the upside from low, $400 down. It went back up 52% push from yesterday. Slightly at PP, a little bit getting pushed to the upside, but not much push to the upside. We are done for the day, guys. Call for the day from our very nicely pushed to the upside, 55, 97, 98, 99, done. Call for the day. You have like more than 20 points, guys. Just beautiful. Low to go up and high to go low. Or even till 3 points. It doesn't matter. You're making anything. Just call for the day. We will keep what we have made. Remember, the successful people or successful traders are not making money. They made money and they stop it. Wait for next setup. Don't just get in again. And again, if price is going down, again you can have from our S1 area. And earlier I told you we have a very strong support at S1 area. Nasdaq just shy a few points from our. This is what a relationship is in between your S&P and Nasdaq. If S&P is hitting and Nasdaq is not, and S&P going up, it will take everything to the upside. Same thing with the Dow S2, S1, beautiful, 100% S1 from our Russell 2000. Again, guys, 10 o'clock news, job opening, and tomorrow, very, very important. Even Thursday is very important. Why? Core PPI and our PPI is coming. And then Friday, we have consumer sentiment, mean inflation data is coming. Green to go down, red to go up, and we'll
see what will happen. Please guys take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. Yeah. You're welcome, everybody. Going down, 3 mid-bands I counted, worked as expected. So 3 mid-bands are done by 9:41. S1 it did hit and went down below, but let's see. We have a divergence on the thing, but so far one area on ES and Nasdaq didn't even touch S1. Let's say ES has gone back into S1. Now, if Nasdaq goes to S1, you're looking at ES to definitely go to S2. Big gap. They're not in sync anymore. Nasdaq is trying to push down again. The black candle on the Nasdaq. Maybe our instant opening to expected low rally is done. Hopefully, you know how it was working. And let's see. For green, make sure price comes from higher high. For red, make sure it comes from lower low. That's your high, and both charts are in the same color. For beginners, at least these are the basics. Let's see if it goes. I'm waiting for my first. 30-20, I'm waiting for my first higher low for my SRES trade. So right now it's going above Fibonacci and doing a little bit of it. Let's see. Instead of right now, if in case it reaches higher high, Then it's a better, safer trade. Safer trade. Whenever, especially whenever you have the. मैं आपके में लॉग इन किया हुआ है. Okay. R1 should be okay. क्योंकि काफी दूर है. R1 नहीं वेट करें. Nasdaq सर R2 लें. R1 अगर ये निकल गई ना Nasdaq, क्योंकि इसने अभी पंप ग्रीन लेना है और Nasdaq ले जाएगी R2 पे, तो Nasdaq को मिडिल वाले छोड़ दें. जिस हिसाब से Nasdaq पिछले दिनों से चल रही है ना, तो अगर आपने अब ग्रीन से बाय किया तो ना. लेकिन इसमें फेलियर की रीजन पता क्या है? ऊपर है वो वाइट लाइन है. वो जो जब वो वाइट लाइन है वो एडिशनल फैक्टर है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है. वो जो एक डाइवर्जेंस की वाइट लाइन आई है, एक डाइवर्जेंस की वाइट लाइन आई है आपको. हाँ, अभी R1 S1 के दरमियान है. Nasdaq थोड़ा सा बस वो पंप लेने लगा है कैंडल को भरने के लिए. आई थिंक होपफुली
Now we have a divergence line to the down, right? So that line, it kind of tells you I may not respect the midband. May not. Doesn't have to. Like in this case, it did. नीचे वो जो white line. In this case, it did respect that midband, right? So अभी भी है वो white line. हाँ, white line pitch हाँ 2 दफा आई है. नहीं आपने उसको इसको राइट क्लिक करें, आपने स्क्वीज कर दिया, राइट क्लिक एनीवेयर या नहीं ग्रे एरिया में राइट क्लिक. सॉरी आपने गलत क्लिक किया, दिखाएं माउस, आपने किसी चीज को क्लिक कर दिया. ये लिखा आता है रीलोड निंजा स्क्रिप्ट, इससे सही हो जाएगा. वो भी हो रहा है. जैसे ही आपका चार्ट किसी चीज पे आ गया, किसी चीज पे स्क्वीज होके ना वो आ गया. Price wants to shoot up. See, Nasdaq is very close to R1, but not a big fan of R1 for Nasdaq. ES should go to R1. Nasdaq is inside R1. And it can penetrate through. There you go. We're almost inside R1 for Nasdaq. One more pump and it will break R1 for Nasdaq. Let's see. Will R1 get respected or not? No idea. एक सेकंड. That trend may go to magenta. May. There you go. Nasdaq is broken R1.
Okay, went to the upper range of Nasdaq. No, I need a right now blue, waiting for a black to go down. Not going to sell until in the SRES. But I think today may not have a position to the downtime. It's still because Nasdaq has broken R1. Oh, we did work. I didn't pay attention. I was on any desk. The lower high and gave you the points. So that SRES worked until 1.5 point, done. 2 point chal jata. So blue, black, and that was our first setup and worked. Now sit back, relax, calm, and now we wait for black, blue to go up. But blue, black worked for our SRES. And look how far that's pushing out. If you can trail, you can trail. Short will happen faster, definitely. We're back into मैं अभी करता हूँ साथ मेरे ट्रेड भी लगे हुए हैं. Just don't trade rapidly. Please let the setup get to you. Otherwise, you will end up losing a lot of money very rapidly in and out. Don't give away what you have already gotten. So R1 did work for Nasdaq, but I did not take that. Too scared for Nasdaq. We're back into the S1 zone. Let's see. From here, does it pull back up? But that was a good setup for SRES. Beautiful. $690. Mm-hmm. That's simple. Like red means going down. No. Blue is I'm discussing different trade with them. No. Like, I was going to say, like, in the candle, like, what is this yellow candle? No, that's just the momentum in it. Like generally, I don't pay attention to it. It didn't touch midband, but it did the same thing, but never quite touched midband right now. So back into S1 for ES. Let's see. I think Nasdaq enough juice to go to R2 now. From here. Let's see. Time will tell. Two, 4, 3. Okay, divergence failed. Midband very close, worked. I need a higher low here. I need a higher low here.
On 60-minute chart on Nasdaq, we have a higher low. Anybody who's watching swing retrace extension, we do have a higher low on 60-minute chart, as well as a higher low on a 60-minute ES as well. Back into S1 for ES. Which way would you like to go? Another mid-band, beautiful trade, 2 mid-bands back to back. But I did not take this one because it was not a lower low, it was a higher low. Yeah, no, I mean, we never, in terms of the next mid-band. Yes. Yeah. No, it should shoot back up, I think. Yeah, so we wait to, yeah, because that is taking a retrace on 30-20. So it gotta be synced. Yeah, you gotta make sure both charts are green or red before you take a trade. It can still work, but your probability on that trade is not that high. Every trade has a probability from 50% to 100%. 50 means you can close your eyes, it will work or not, right? Every trade, it starts with 50. Yes or no? Yes. There's no 0% because if it fails, it's a 0, right? So 50 to go up, 50 to... What we want to make sure the probability goes 50 to at least 70% are profitable trades. If you are hired as a trader and your average is above 70, you're considered a very good trader. The moment you start go to from 70 to 80, exceptional. I haven't seen 90 plus rarely that they take a trade, 9 out of 10 are good. Like my average is around 76, right? So like, it's okay. Like if I take 7 trade, 10 trade, look how far, news, guys, please, news. Don't be in a trade, for God's sake. Yes, news 10. And it's a high impact news, please. नहीं करते ना, अलाउड नहीं, ईए में कर सकते हैं, पीए में नहीं. ले गए जी न्यूज़ को ऊपर ले गए. I was lucky enough to be in the right direction. I was long. वो जिस स्पीड से वो गया है, मुझे उसने $343 दे दिए माइक्रो में, 5 माइक्रो में डन. आपने भी लिया किसी ने ग्रीन में? अच्छा, हाँ ठीक है सर. वो देखें, वो न्यूज आई and 10 o'clock jolts. Let's look at the jolts opening quickly. Green or red? Oh, green. Job openings. So is it green to go up or down? Did he say? I wasn't paying attention. Look how easy it shot up and down. So let's give it 5 minutes for it to calm down. I was in an any desk and I missed the time, but 10 o'clock was a sharp
So we're almost at R1. Look at this candle too. So that's why you have the news sitting in front of you all the time, that what time it's going to come as a red impact. You could be long. Now it's 50-50. Hey, I was long for 5 micro. I just saw 343. Good for me. But that 343 could be minus on that side too, right? EA is okay. Practice is, अगर EA में तो वो निकाल देते हैं आपको, PA में नहीं निकालते हैं, तो हम कहते हैं करो ही ना, right? So जब आपका एग्जाम होगा, evaluation exam, जब funded account का आएगा ना, starts with EA, evaluation, and then PA, personal or performance. That's where you make money with a funded company. That's real money. Not real for you, real for them. It's almost as good as real because you can draw the money. Yes. Oh, back to S1. This is crazy. See how fast it's going. Oh, that candle turned quick to red. I think more job openings means. Yeah, but it's just hammering it at this time. जिस स्पीड से ये जा रही है, अब पता नहीं इसने कहाँ जाना है इस वक्त. लाइक we have a higher low and gave us a 15. So effect will continue for a little bit, I think. It is going fast. S2. Are they gonna hit? Below S2, guys. S1 is touching for Nasdaq, almost S1. And Nasdaq is in S1. So may reverse. Let's see. Okay, sure. 10 minutes. Okay. That went crazy up and down. Too much volatility right now. We have a first higher low on 30-20. Black, blue right now. Just remember, 30-20, we have a black, blue. Now, अभी जा रहा है लेकिन पहला ब्लू आ गया. आपके लिए नहीं है. नहीं 30-20 में ब्लैक ब्लू आ गया. MES.
नहीं, ये वो देखें, ब्लैक ब्लू, ये मतलब है, ये जो नीचे कलर्स हैं, ब्लैक ब्लू ब्लैक है ना। तो जब मैं कहता हूँ कि रेदर देन मैं हायर लो बोलूं, मैं आजकल बोल रहा हूँ ब्लैक ब्लू, वो ज्यादा आसान है बोलना। हायर पे कौन सा कलर है, हायर लो पे कौन सा कलर है, लोअर हाई पे कौन सा कलर है, लोअर लो पे कौन सा कलर है, तो ब्लैक ब्लू ब्लैक। तो व्हेन आई दैट्स द फास्टेस्ट वे फॉर मी टू सी, बी रेडी। क्या देखें कितना बड़ा ट्रेड हो गया। दूसरा सेटअप, आराम से बैठे हम अगले एमिनेशन का वेट करें, उसको नैस्डैक को नीचे उतारने के लिए अगले का वेट करना, अभी जल्दी नहीं जाना, प्लीज गिव इट टाइम। आई टुक दैट ब्लैक ब्लू ट्रेड रिटिकुलसली पर दिया में 2 माइक्रो से। ठीक, हम मैंने 2 माइक्रो से $111, 2 माइक्रो से। सो just wait for the setup and you will have opportunity along the lines. This is a, ये जरा सेफ तेज ट्रेड के अंदर ज्यादा अच्छा चल जाता है। मिड बैंड लगाना मुश्किल हुआ वो इस वक्त, आप मिड बैंड पे लगाते हैं वो आके जाके निकल भी जाता है। सो मिड बैंड ट्रेड इज सो अब इसको ऊपर जाना चाहिए टेक्निकली, but we have a blue black right now, just be ready. लेकिन let's see, numbers green है तो शायद पॉसिबिलिटी है। बहुत स्पीड है जी इस वक्त। आपकी कैंडल फॉर्म होने वाली है 30-20 में, लेट्स सी देती है हमें ये ट्रेड के नहीं। ये तीसरा सेटअप आया एंड हाउ मुश्किल लग रहा है, उसने हायर हाई बना लेगा शायद। हैं? नहीं, मैं 15-30 तो देख ही नहीं पा रहा, इतना ही स्पीड है। सिर्फ 30-30 का पिछला सेटअप लिया ना मैंने, और अभी भी 30-20 में सेटअप ले रहा हूँ, लेकिन वो हो गया खत्म। सो वी डोंट हैव दैट ट्रेड। बिकॉज ये वाला स्टॉप सेल वाला था, वो आई ही नहीं कैंडल, तो हमारा ट्रेड खत्म हो गया है। Now it's a doji on 60 minutes. Let's see which way it wants to go. बहुत स्पीड है जी। Mid band came. तो वो जो कैंडलस्टिक है उसके अंदर वो ऑनिंग अ डोजी, राइट? हाँ, लेकिन वो हमने 60 मिनट में, 60 मिनट के चार्ट। Let's see if it wants to go. We have a mid band trade, mid band 30-20, and it worked almost. There you go. Gave us a bit of a बहुत स्पीड है जी अभी भी न्यूज़ की। So I'm not in any trade whatsoever. So 30-20 mid band worked, no problems. It wants to go up. Again, back to S1. S1 is like a magnet holding it.
उस नंबर के अंदर पिघ रही है जो तो चार्ट पे ऐसा नहीं दिखाता। जाता है आपके होता है। अच्छा ये वाला है, ये रेड लाइन वो चार्ट में जो रेड वाली लाइन है दैट्स S1 राइट, जस्ट टेक रेड लाइन एंड 15 नहीं लिखा होता है उसको। नहीं वो वाले ऐसे नहीं, हमें इस तरह आपके एक 30 मिनट का आपका चार्ट होगा, 30 मिनट के चार्ट में नजर आ रहा है ना, ये देखे ना, नजर आ रहा है ना कि कहाँ पर है। एक्सट्रीम तो दिखा रहा है ना। नहीं आपने रिवर आज के एरिया आप अर्ली आ गए थे ना, इसको राइट क्लिक करके ये माउस राइट क्लिक होगा, हाँ, और ये लिखा है रीलोड, हाँ, क्योंकि at 9:30 you gotta reload because it updates. रीलोड क्या है, निंजा स्क्रिप्ट और Ninja script. Another mid band is okay, but mid bands are too fast. Back to S2. थर्टी मिनट का चार्ट आपके शायद एरियाज अभी इनेबल ना हुआ, क्योंकि वो वाली ट्रेडिंग जरा एडवांस में आ जाती है थोड़े, लेकिन आप कल आ रहे थे तो राइट क्लिक करें और उसको करें रीलोड निंजा स्क्रिप्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। 30 मिनट के चार्ट in this मुझे एनी डेस्क दें, एनी डेस्क दे दें। We're back into S2. रीस्टार्ट करें, निंजा को रीस्टार्ट करके पीसी को रीस्टार्ट करें। Mid band worked, but too fast. नीचे आता मूवमेंट तो ऊपर की डायरेक्शन से आता है, हाँ, अगर ऊपर आएगा तो नीचे की डायरेक्शन। करेक्ट।
Nasdaq क्या हाल हुआ है सर? सो नैस्डैक है R1S1 के दरमियान घूम रही है अभी, कुछ नहीं अभी पता उसका. Waiting for a higher low right now to go up. There you go. मेरा पहला हायर लो आ गया 30-20 में, ब्लैक ब्लैक ब्लू आ गया. आ रहा है ब्लैक ब्लैक ब्लू सर 8.5 या 34 टिक्स यहाँ से देखेंगे. लेकिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. वन टिक एंड इट विल मेक ए लोअर लो एंड देन हमारा सेटअप खराब हो जाएगा. अभी तक डन नो, सो नो लॉन्गर वैलिड. सो S2 में आ गई प्राइस दोबारा, S2 से भी निकल गई. बहुत तेजी आ गई थी मार्केट में. अभी इसमें बहुत बार मिड बैंक के चांसेस आए अपॉर्चुनिटी, हाँ. बट यू डोंट रिकमेंड. आई डोंट थिंक लाइक जिस जो स्पीड है न्यूज के बाद आप क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, उसको थोड़ा सा स्लो स्टेबल होना. उस ट्रेड में फिर हम डिफरेंट ट्रेड पे चल जाते हैं, एरिया ट्रेड पे. सो व्हाट आई एम डूइंग इज वेटिंग फॉर एक्सपेक्टेड लो टू बाय. दैट्स व्हाट माय प्लान इज राइट नाउ. Yeah, exactly. So if I already made my whole target for the day, I'm not gonna mess it up because of greed. पहले मैं वेट करूंगा 40 और देखता हूं कि कितनी क्लोज से रिटर्न होती है. We have two blacks waiting for a blue. 30-20 देखें, two blacks आ गए हैं to go up. Let's see. S2 से bounce हो रही है, maybe it go directly up. Never know. अभी तो ऊपर ही जा रही है. So Nasdaq is at between R1 and S1, and let's see which market overtakes which particular one. फिर आपका विंडोज में कोई एरर आ गया, इंटरनेट डाउन है. ओके, वाईफाई में इश्यू है. Wait for the areas, guys. Wait for expected low for ES near at least 5557 for ES. ये 15 टाइम मैं ऑनेस्टली देख नहीं रहा, बहुत स्पीड आ रही है. मैं अभी इधर हायर लो का वेट करूंगा. इधर हायर लो आई 8.5 डालूं और वहां से तीसरा चौथा ट्रेड ले लूं आज का. 30-20 के चार्ट में हायर लो आएगा ना, so that trade is called swing retrace extension trade. At that time I don't care about background color, I don't care about anything. Then that's a trade, swing retrace extension trade.
That's my game plan right now. Let's see. Or if it goes to expected low, I will buy. Is any stock up yet? No. Nvidia is up 108. That's a good sign. Slightly. S2 नहीं अभी तो S2 पे घूम रहा है जी. हाँ अब ये HL आपका आ गया है तो यहाँ से 8.5 ऐड करें और देखें कि कितने पॉइंट देता है. ज्यादा देने चाहिए मेरे हिसाब से. Bless you. Let's see if it makes a lower low in S2 or not. अभी तो है उसमें जान है. Back into S2 because Nasdaq is that candle is doesn't make a lower low yet. Yeah. We're just trying to see if it'll make a lower low or go from here. Done. No more trade. हाँ अब नीचे expected low से buy करेंगे जी because it's testing S1 again for Nasdaq. S1 हो चुका है सर. S1 हो चुका है Nasdaq का ऑलरेडी क्योंकि बहुत क्लोज आ गया था लास्ट टाइम. No, S1 for Nasdaq is 19,300. But this mid band, if you were doing, kind of worked. हाँ हाँ तो और accuracy बढ़ जाती है. We have a higher low on 1510. Maybe our sign to go up. Let's see. Nasdaq is inside S1, very close. Let's see.
Nasdaq went as low as today S1. Nasdaq S1 is done. अभी एक्सपेक्टेड लो नहीं है, एक्सपेक्टेड लो तो बहुत नीचे है, 55.50 पे, अभी 20 पॉइंट है यहाँ से पड़े. All right, Nasdaq is officially in S1. अब S1 तो तोड़ दिया ना Nasdaq ने, तो S2 पॉसिबल है क्योंकि R1 से आ रही है. हाँ 570 से 370 600 क्रॉस किया. आज सुबह नहीं किया, आज नहीं किया, मॉर्निंग सेशन नहीं किया, वो कल शाम का था, आज मॉर्निंग में नहीं. अभी तो ये S1 का बॉटम रेंज टेस्ट करके आई है. नहीं सुबह मॉर्निंग में, मैं वो नाइट का है. नहीं आज सुबह तो नहीं है यार. 610 आई है. यस 610, 19,610. अब देखें ये कितनी नीचे ले जाके वापस लाएंगे. दैट्स द क्वेश्चन नाउ, राइट? Okay. More Trump, more tariffs are coming. Trump Canada steel goes into effect tomorrow. There you go. So more nonsense. This guy is gonna kill. This news can also make Oh, impact. big. Like last 2 weeks have been hell and back. So tomorrow this is going to happen. Tomorrow. So inflation will be there. tomorrow is critical. At this time, the best thing is to stay away from the market. No, if we trade with the trend, like these worries are for stock guys. We're significantly scared, you know. ठीक है, very good. 1510 वाली SRES ली ना, congratulations. $15.10 में SRES बनी थी. अब 30-20 में बन गई है जी. हायर लो, बी रेडी. अगेन उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ. हाँ नहीं, जो SRES वाले ट्रेड कर रहे हैं. हाँ जी होना शुरू हो जाएगा एनी टाइम. सो 55.77 plus 34 ticks to the upside will have a black candle to the upside. So be ready 30-20 because you have 2 blacks and a blue. सर देखें नंबर, मेरे ख्याल इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें. 10 ऐड करके 1.5 माइनस करें, वो ज्यादा फायदा होगा. 10 ऐड करके 1.5 माइनस. देखें कैंडल तो बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी नहीं.
क्यों सर 30-20 अभी नहीं जी, अभी इसका मूड नहीं है। बड़ी लार्ज विक है जी। उफ, और दिस कैंडल इट्स नॉट स्टिल कंफर्म। मैं कल से दो चीज नोट कर रहा हूँ कि जहाँ पे जो बीच वाला है ना, इसको हम कौन से कहते हैं, ये वाला जो बीच वाला चार्ट है 30-20 no that's area trade। एरिया, इसमें एरिया ट्रेड में मैं करके देखूँ जैसे ये जो हाँ वो कैंडल वो टाइम बेस्ड है। टाइम बेस्ड है, तो इफ इट इज we दैट you can change it to 15 minutes, completely different look हो जाएगी। That's why we don't use time based candles, we use support and resistance and trend based candles, because trend based candles we have more opportunity. Time based candles are good for support and resistance, like from which point it can bounce and from which point it can reverse. ठीक है, मैं अभी आप ऐसा करें, आप डैनियल को देख लें, he should be आपका भी नहीं आ रहा ना। हाँ, तो नंबर चेंज हो गया है हायर लो का, प्लीज कीप दैट इन माइंड। हाँ जी, ऊपर 5575 plus 34 ticks। So if you're done your mid-band trades, wait for the area trade. Expected low, we will be all buying. ES. Nasdaq is an S1. Let's see where now it wants to take us. More down. So it's very close to night low now. Didn't touch night low. If it makes a lower low, your setup is finished. Two more points and more mid bands are working to the down. Touch night low. नाइट लो क्या है जी आपका? ओ सॉरी, ये था करंट का लो, आज का जो जितना लो आया, इससे लो नहीं ना गया, तो 5557 इज द लो। नैस्डैक फिर वापस ऊपर जा रहा है, सो इट मे टेक इट अप, विल सी। Double divergence, so it should shoot up now. Hopefully we have a black candle to the upside. ए बनी 8.5 पे बन जाएगी कैंडल आपकी? Not yet. And take, hopefully we'll just rock up. No. Black candle नहीं फॉर्म हुई जी।
wants to go down more. Another mid band to the down working. Nasdaq down more. Speed. सर उनको दिखा दें कि क्या डैनियल को. Very close to expected low again towards so 5557 is the all-time low for this session and night session. Let's see if it wants to go and test it. ये एरर क्या दे रहा है? निंजा दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है. All right, we are very getting close to expected low, guys. सर आई क्लाउड कब ऑन हुआ है तो उनको दिखा दें, वो उन्होंने दोबारा करना होगा क्योंकि आई क्लाउड में साइन ऑन हो जाता है ना तो वो फिर सारा मसला आ गया. एक दफा उनको दिखा दें. सर वैल्यू आपकी 5550 है ना. हाँ वहां से लॉन्ग करेंगे. वहां से अभी 9 पॉइंट रह गए बस, आने वाली है. मैं तो 50 पे बैठा हूँ. हाँ हाँ आ गया. 60 से बाउंस कर रहा है. देखो 5559 MES बाउंस किया. Another mid band worked. कंप्यूटर ने ना एक मैथ किया. It doesn't give you a pinpoint. It says there's a range of a possibility to reverse. So it will never give you 100%. Anywhere. So it could bounce from even 51 or 39. We have no idea, but it is, you know, yes. Yes. Test हो रहा है 30-20 का. Maybe it'll make a lower high, higher low. Let's see. One more time opportunity. But we're not sure yet. There you go. We have another lower low. It's going towards expected low, guys. Sir, 50 वाला zone बनता है. Because Nasdaq is inside your S2 now.
5555 अल्टीमेट लो अगेन। बस थोड़ा सा और एक्सपेक्टेड लो को टच होने वाला है। चल 5 पॉइंट अगर देखें 40 से 5, क्योंकि 40 से आपको इस दफा पर 15 पॉइंट रखेंगे, तो ये आप देखें कि आपने 50 लेना है, 40 लेना है, 41 लेना है। ये अब आपका 40 पे रखेंगे तो वो शायद 42 से चली जाए, तो 50 से उसके दरमियान उसका है ना। यस, हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है एवरी डे। लेकिन हमारे कंप्यूटर ने 90% एक्यूरेसी से 18 साल चलाए हैं, तो नॉट ए प्रॉब्लम कि अगर एक्सपेक्टेड लो से जनरली कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ। डाइवर्जेंस है अभी। हम मिड बैंड का वेट करें 30-20 का। 5556 से पहले ना बाई कीजिएगा। 5566 एग्जैक्टली। मिड बैंड टच किया है एंड लेट्स सी higher high, higher low. Will it go to Fibonacci or give us some points? I think it should go back up now. There you go, my mid band trade, 2 points done. It should shoot up now, hopefully. Beautiful trade. Beautiful trade. Beautiful. आपको पहले ही कह दिया था 30-20 के मिड बैंड पे रहना। लार्ज ट्रिगर खुले हुए हैं, मिड बैंड हायर हाई से आ रहा है, तो इसने ऊपर लेके जाना है। अब ये ऑल द वे ऊपर जाएगा, जाने देंगे। ट्रेल कर सकते हैं तो करें। अब यू कैन। हाँ सर, अब 10 टिक्स तो पीछे रखें ना, 10 टिक्स का रूल है ना। लेकिन इस मिड बैंड पे चला 100%, 2 पॉइंट दे गया आपको। सो व्हेन आई शाउट मिड बैंड 30-20, बी रेडी, लाइक यू नो, बिकॉज आई एम एनालाइजिंग। मैं 15-10 पे तो आज देख ही नहीं रहा, जिस स्पीड से 15-10 जॉर्ड्स की वजह से चल रहा है। हाँ, डाइवर्जेंस में है ना, डाइवर्जेंस टू द डाउन साइड है, लेकिन वो छोटी बनाएगा, छोटी डाइवर्जन। नहीं, दोबारा नहीं, लेकिन अभी डाइवर्जन खत्म हो रही है, वो स्ट्रेंथ जा रही है ऊपर, स्ट्रेंथ जा रही है ऊपर। आज इसलिए मैं करवा रहा हूँ, जोल्ट्स की जो पहले आई है 10 o'clock से पहले 15-10 सारे चल रहे थे। ये जो अभी वॉलेटिलिटी चल रही है, इस वजह से मैं
आपको 30-20 पे लेके आया हूँ. Rule same है, green to go up. If you're trading on 30-20, you don't watch 15-10 at all because it's a lower time frame. But if you're doing trade on 15-10, yes, watch 30-20. Watch it, right? So, है क्या हो गया? देखा? मेरे आवाज सुनी? हाँ. अच्छा. मैं तो बाद में लेके. ओके, ठीक है. नहीं, बंदा मुझे को मैंने बोला जब मिशन नहीं है, कितना बजे तो मैं यहाँ पे तो वो चेक करनी है. Nasdaq, I hope somebody took S2 though. S2 लिया किसी ने? S2 ले लिया Nasdaq. आपने भी लिया? ठीक है, 10 पॉइंट ले लिए. ठीक है. ये देखें, ये डाइवर्जन आई है लेकिन वीक है अभी क्योंकि एक्सपेक्ट क्योंकि रीजन ये है कि वो S2 से नीचे आ रही है ना, एक्सपेक्टेड लो, तो उसमें उतनी जान नहीं है और नीचे जाने के लिए क्या जाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस आपको पता ही है, बट बेस्ड ऑन it can rapidly, weather can change in these days with Mr. Trump. Next 4 years we're gonna be like this every day. So Biden was after November this has been happening. We come in and we don't know how fast he's gonna do. Like Elon went and price went 22,450. And now all these tariffs brought all the Nasdaq has been down 22,450 minus 19,140. So if you had money in RRSP, RESPs, mutual funds, they have devalued significantly in the last 3 months, especially in last 3 weeks for sure, because the market is 3,000 points. Nasdaq is down and ES is down. What 6162 minus 5555. $607 ES is down. So let's see which way it wants to now go. सर 50 ठीक है, अभी कहाँ से गुजरी, 55 से आई है ना, तो 50 ठीक लग रहा है मुझे. Nasdaq has gone into almost S2 one more time. नहीं अब ये बुलॉक्स इज वन डे पास. $971. Okay. Now we're waiting for a higher low, 30-20 higher low का वेट करेंगे. So black blue का वेट करेंगे. Thank मेरा रोसा, sorry. Thank you. 30-20 black blue, guys, be ready. Higher low लगे, black candle to the upside. चांस बन रहा है आपका. अगर यहाँ ब्लैक कैंडल लग गई
to the upside, you have 2 black so far. हाँ हाँ, पहले वो जैसे तो हमारा सेटअप बनना शुरू हो गया ना, हाफ हो गया. हायर लो लगेगा तो हमें पता लग जाएगा कि चीजें जो है ना. ये आपकी ब्लैक कैंडल देखते हैं. लेट्स सी. कोई बात नहीं, कोई बात. 2 माह बाद आप मुझे बता रहे होंगे कि डाइवर्जेंस लग गई है. अभी आपके चैप्टर्स खत्म हुए हैं, प्रैक्टिकल डे नंबर 2 है, राइट? सो इट विल टेक सम टाइम. एज लॉन्ग, अब देखिए कल से बेहतर था ना. अब मैं अगर आपसे कहूँ 15-10 आप बता दोगे, 30-20 बता दोगे, एरिया बता देंगे, 4 चीजें ऐड हुई ना. एवरी डे आज जो सीख रहे हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, राइट? अब इन्होंने मिड बैंड आज ट्रेड किए हैं थोड़े से, राइट? सो हाँ, लेकिन नजर आ रहे हैं कि क्या हो रहे हैं. नो प्रॉब्लम. दोनों प्राइस हायर हाई से आ रही हो, ग्रीन है, दोनों बाय कर लें. लोअर लो से आ रही है, अगर वो डाइवर्जेंस की लाइन आ गई है, वो मिड बैंड रिस्की हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. दैट्स ऑल. 1510 is in a divergence trade right now. 1510 has 2 higher highs, but now we will have a line coming to that mid band. The moment it makes a black candle to the downside. So the key is every black candle price reverses. So it's like waves up and down, right? So whenever I say a black candle, either it'll be up or down, right? No, नहीं, ये वाला वो आपका ट्रेड नहीं चल रहा. हाँ, जब मैं ब्लैक कहता हूँ ना, जो ऊपर हायर हाई का नंबर आता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ. तो मैं थर्टी 20 का हो सकता है जी. मैं वेट कर रहा हूँ 30-20 के मिड बैंड पे, 5576 पे, अराउंड देयर, बिकॉज आई एम रीडिंग MES. सो जस्ट 30-20 का मिड बैंड देख रहा हूँ. 5576 हुआ ठीक है आपका? अब गए हो गया वो आई क्लाउड का मसला. वन ड्राइव सर, वो बाहर बंदा उसको अनइंस्टॉल कर दे प्लीज. वो देखे वो वाइट लाइन आ गई. तो अब देख मिड बैंड आ रहा है जी. अभी तक नहीं खराब हुआ सर, अब अभी तक खराब नहीं हुआ जी, ऐसे ना कहें. नहीं, हो गया, पास हो गया, डन. खराब पता कब होता है? कलर चेंज होता है. देखिए कितना, $106 उसने मुझे माइक्रो से दे दिए, मैं 5 माइक्रो से ले लिए. तो आई होप एवरीबॉडी टुक दैट मिड बैंड. गुड. अब अगर लेना है तो फिबोनाची के अंदर से लीजिएगा, ब्लू से, ग्रीन से लीजिएगा. ग्रीन का लोअर वो रूल नहीं चेंज करना. अगर ES में लेना है तो फिब के अंदर से लीजिएगा. चक्कर ये होता है कि जब थोड़ा सा अपने फेवर में जाने लगता है ना, तो हाथ बड़ी जल्दी क्लोज पे हो जाता है. ये जब आप लास्ट होते ना तो रुक जाता है. यही तो नुकसान है सबसे.
अभी ब्लू फिब के अंदर है, Fibonacci boxes. Fibonacci boxes. It's a mathematical calculation. Every time you have a swing, the retrace is from a certain point. So the computer will plot those boxes called Fibonacci retracements. No. This is another type of a trade. Like yesterday, I explained 9 or 10 type of trades. For beginners, I don't touch these at all because it will get confusing pretty quickly. So either, because your brain can only do one thing at a time. Either it can watch the background color, watch the area, watch the fib. So you should master one type of trade. And the top 3 are area. When the price comes in that zone, good evening. 3000 गिराने के बाद आए आप। अब जाएगा, टेस्ला का हाल देखा है, 213 तक मेरा मूड है, 208। चलो आ जाए जी, बैठे हैं जिधर मर्जी। नहीं, जो हालात पीछे चल रहे हैं उसके तो ऐसा ही होना है। Area, swing retrace extension, and midband. Next one is midband. Yes, दोबारा लो की तरफ आ रहा है जी, बहुत बड़ी बड़ी swings ले रहा है वो। जाने दें जितना नीचे जाना है। अभी तक हायर लो है, उसकी एक्सटेंशन ही चल रही है। आ गया जी, आ गया। एक्सपेक्टेड लो गाइस, बी रेडी। हैं जी, हाँ जी 50 पे बाय करना है। 50 से अंदर ले लें, 50 ले लें, 49 ले लें, एरिया ट्रेड है ये। दिस हैज nothing to do with color. You will go against the color in this trade. This is called a counter trade. The computer has predicted that this is a support. Will it work? I don't know. कौन सा ब्लो सर, उसको आप इग्नोर कर दें, वो बहुत स्पीड से चेंज होंगे, वो मोमेंटम के हैं, आप उसकी वरी ना करें। ब्लू बार, येलो बार, रेड, ग्रीन, सिर्फ आप एक बैकग्राउंड कलर ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ बैकग्राउंड। Let's see if we have a higher low here. Midband worked, came down, touched midband. Let's see if we have a higher low on 1510 first. No, not yet. बहुत स्पीड है जी। Now we have 50% setup done. We have 2 blacks, lower lows. So be ready, please. I'm waiting for my lower high on 3020 now. लोअर हाई आएगा, ब्लैक कैंडल बनेगी, फिर मैं ऊपर जाऊंगा, उससे पहले मैं नहीं जा रहा। Fibonacci touched. Sorry.
We have a higher low, guys. आ रहा जी 5563 आ गया. ये ऐसे 5563 पे बाइंग बनती है। नहीं 63 में 34 टिक्स ऐड करने हैं अभी. ये इसमें मैथ चाहिए आपको. 5563 प्लस 8.5 वहां 5571 से बाय स्टॉप बनेगा. So that's where I say you're going to buy in future, not right now. When the price hits 5571, that's where your buying will happen. Because मैंने rough math किया था. 5563 5563.50 plus 8.5. Your candle will open at 72. 72 पे आपकी कैंडल बनेगी जी. Buy stop. बाय स्टॉप है 5572। Yes. So I want to buy it in future, not right now, because I need a black candle to the upside first, because that would be my swing retrace extension. There's no extension. Let's see, guys. We're getting ready. Not yet. Last time it gave us a little bit of a scary thing. It was, but 72 पूरा 72. अभी तक तो 72 ही बन रहा है. अभी एक टिक और नीचे आया तो फिर वो खराब हो जाएगा. Not yet. Still confused. तो वो अब आपका बाय स्टॉप का ऑर्डर नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो करंट मैथ है ना वो नए नंबर से चेंज हो जाएगा. तो वो 8.5 ब्लैक कैंडल अब डिफरेंट नंबर से बनेगी. हाँ, अब 60 में ऐड करेंगे 8.5. दैट विल बी सर 55560.50 प्लस 5569 टू बी एग्जैक्ट. हाँ या नहीं मैं एमईएस कर रहा हूँ तो मेरा 69 बना रहा है. But again, going down, price came from a lower low. Background color were same, mid-band worked. So if you're going down, you go with the mid-band. If you're going opposite, you wait for the black candle to up or down. Clearing area, wait for the 50, 50, 49, 45. Let's see which. At least 2 points तो मिलते हैं. Where we have to buy at the mid? At the mid-band. Buy or sell at the sell limit, buy limit. Yeah. तो अभी आपने sell किया था 2 पॉइंट लेके बाहर आके close कर दिया. Black candle is about to be formed, guys, on 30-20. Be ready. Let's see. And we are done, guys. Congratulations. Done. Fifth setup. Okay, everybody's happy. Please pay attention to when the setups are being done. वहां से बाई स्टॉप था, वो गया, उसने आपको 2.5 पॉइंट 3 पॉइंट दिए, बाहर आ गया, डन हो गया है. आपने 3 लिए, 2 लिए, ठीक है. तो सेट अब देखें वो ट्रेल करें अगर कर सकते. ठीक है, आसान हो गया ना, इजी, कोई स्ट्रेस नहीं है. जब सेटअप नजर आ जाए SRES का बाय कर लें. इसलिए मैंने आपको भी सिखाया बाय स्टॉप बनता है वो. तो मैं खरीदूंगा जब ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड आएगी फ्यूचर में, उससे पहले नहीं. अब इसको रॉकेट की तरह जाना चाहिए ऊपर, बिकॉज़ नैस्डैक ऊपर की तरफ पुल शुरू हो गया नैस्डैक का. लेट्स सी, टाइम विल टेल. बट राइट नाउ 5 out of 5, नो फेलियर ऑन 30-20. ਜਦੋਂ कॉन्फिडेंट आ गया ना, लॉट बढ़ाई जाना. हाँ ठीक है, ਉਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ बढ़ा लेना, मीनिंग के नहीं लॉट बदल देना, लॉट ज्यादा ले लो. 80 पॉइंट और नहीं है, 2 लॉट ले लो ना. हाँ अच्छा वो समझ आ गई. सॉरी तो 2 लॉट लोगे ना, 2 माइक्रो ले लो, 3 माइक्रो ले लो, क्योंकि ऐसी पॉइंट तो घट ही लेने ना. हाँ पॉइंट 2 ही रखो ना. ओके देखो एस वाले उन्हें 19 पॉइंट देते हैं ना यार, 19 8 पॉइंट देते. अगर तुसी एटीएम वाली ला दोगे ना,
ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅगर सिंगल लॉट रखना है फिर ट्रेल करो, नहीं बुल लॉक्स नहीं कर सकते। मैं पता कि यार मैं की करदा $112 मार्केट ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ 112 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। एग्जैक्टली ऑटो ट्रेल हर वक्त और फिर मेरा 112 रह जाता है ना मार्केट में, तो फिर कहीं आगे पीछे से पॉइंट 2 पॉइंट करके ट्राइंग एज मैनी। अब देखें एक पर डिया का सिंगल लॉट मुझे वो दे गया है $77, एक पर डिया का सिंगल लॉट। तो एक दफा ये ब्लैक कैंडल अगर S2 और S3 में आ गई ना तो इसने शूट अप करना है, R2 R3 में आ गई तो शूट डाउन करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लैक कैंडल कहां गिर रही है। तो आपको ये अगर S2 और अभी ये कहां ब्लैक कैंडल आई, S2 और S3 में, ठीक है, आपको पता है सपोर्ट लेवल्स है ना, तो यहां से इसको ऊपर शूट करना चाहिए। तो यहां आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं ना, मीनिंग ये पॉइंट ज्यादा, ये गई है सर 30 पॉइंट, 30.85 माइनस 8.5, 22 पॉइंट थे। अगर आप 22 ना लेते इसमें यार 10 तो ले लेते। मैं ये नहीं कह रहा व्हाई डिडंट यू, 2 पॉइंट के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है आप लोग। तो एज यू विल गेट कंफर्टेबल, पहले आपको ट्रेड सिखाना है एंट्री, फिर आपके जो प्रॉफिट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़वाऊंगा। अभी 30-20 का मिड बैंड टेस्ट हो रहा है जी, एक सेकेंड मैं वेट कर रहा हूं ग्रीन बॉक्सेस के फिबोनाची तक। ये देखें 30-20 का मिड बैंड भी चल गया, 100% चल गया, गुड जी, कंग्रेचुलेशन जी, स्पीड से आज चल रहे हैं। एक कोई गल नहीं सर, इट्स ओके। वो देखो उतों 10 पॉइंट उतों दे गया लो जी। अगर मिड बैंड को टच करे तो वहां लेना। हाँ मैं इस वक्त आज इनको करवा रहा हूँ 30-20 का मिड बैंड, क्योंकि जॉल्ट्स की रेड इम्पैक्ट है ना, और वॉलेटिलिटी पीछे ये जो बकवास कर रहा है ट्रम्प, अब कल टैरिफ लगने हैं, कल पता लगे ये उन 18,000 पे पहुंची हो, तो इसीलिए वी आर एवरी डे बी रेडी। सो सिंस February आई हैव एन एग्जैक्ट अच्छा नहीं चलो नहीं टैरिफ वापस ले लेना। अच्छा लगा दिया, वो देखें जी कहां से कहां चली गई जी प्राइस आपकी। खत्म है, अब नहीं कल आएगी, 18 मार्च को ला रहे हैं वो 90% ऑफ, आज नहीं 18 मार्च को। नहीं वो निंजा में नहीं चलता, वो हम दोनों के लिए, क्वांट टावर के लिए $16 का अकाउंट मिल रहा है, और उसकी मंथली फीस भी नहीं है। हाँ मंथली फीस नहीं है, सबसे अच्छी बात है, बंद है हमेशा से, डे ट्रेडर में मंथली फीस नहीं है, ईए में भी नहीं है, पीए में, पीए तो है ही नहीं है। तो एक और मिड बैंड चल रहा है अभी, वहीं पर टेस्ट हो रहा है, लेट्स सी। S1 S2 पे दोबारा आ गए। नाउ एक्सपेक्टेड लो से बाय करना है, एक्सपेक्टेड हाई से सेल करना है। अगर R1 आ गया, लेट्स सी एक सेकेंड, R1 ES ठीक है, R1 से सेल कर सकते हैं, बहुत दूर है R1 अभी, क्योंकि R1 से पहले आना वैल्यू एरिया 5631 का गेट पड़ा हुआ है वहां।
Only reason you will be giving money now after learning SRES is over trading or revenge trading. I'm telling you right now. Only reason you should be losing money is gambling without outside those parameters. 2 blacks, 1 blue, go short, go long. 2 blues, 1 black, go short. ये दो पॉइंट करते करते आपके एग्जाम भी पास हो जाएंगे, पीए भी आ जाएगा, इन मल्टी कॉपियर से भी चलेगा. Just master SRES. I'll try to make a video on that hopefully soon. Just too many pending projects. मैं आज करता हूँ अभी. No problem. दो मिड बैंड चले ऊपर जाते हुए. Come on. Missed it. करें जो मर्जी मार्केट करें, नो प्रॉब्लम. नीचे जाएं फ्यूचर्स के नीचे जहां पर ईएस लिखा है ना ऊपर, वहां जाएं माइक्रोस के अंदर. माइक्रो देखिए मिड बैंड टू द डाउन चल रहे हैं, दोनों कलर नीचे सेम है तो सेल टू द फ्यूचर्स में जाके माइक्रो एमईएस लिखा होगा आपका. है सर. माइक्रोस में जाएं. एमईएस एम माइक्रो नहीं यहाँ जाए ना. ये देखिए एमईएस नहीं लिखा हुआ. मार्च 25 MES MAR. यस सेटअप आ गया, लेकिन मैं वेट करें, शायद ऊपर जाए. वेट, अभी सेल नहीं है, अभी वेट करें. कैंडल बन लेने दें पहले. एक में चेंज करेंगे वो सब में. हाँ जी. ब्लैक कैंडल बन गई. डन. एक पॉइंट दिया अभी उसने 8.5 से. लेट्स सी. सेटअप तो आया लेकिन थोड़ा वीक है, बहुत वीक है जी. लेट्स सी इफ इट पुशेस डाउन मोर. Remember, your stop loss may get hit in this one, or you want to exit early. It's up to you. So far, it's only given us a point. अभी तक ये स्टॉप लॉस वाली कैंडल चल रही है. Let's see.
Not yet, hasn't hit stop loss yet, and it may. Still not yet. Still not yet. Stop loss got hit. Now it's in consolidation. So wait, things are after 11. Price is in consolidation. Too many black candles, too quick. Now black candle to the downside. Consolidation. Pure consolidation between S1 and S2. Midband is almost flat at 30.20. So I wouldn't take any trade whatsoever right now on ES. Look at how small these candles are becoming. Black, 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 black. So please no trading yet until it gets out of. अभी कुछ नहीं है, डन हो गया. या तो R1 से ऊपर जाए. कल एक भी ग्रीन कैंडल नहीं आई. ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हॉल्ट कर नहीं हॉल्ट करने वाले थे. 7% पे हॉल्ट हो जाते. That's how small your candles have become now. Nasdaq area, bus. Can you make a new tab for MES? Yeah. Just right click, duplicate, and then new tab for MES. Yes. मैं सिर्फ उनको समझाना है SRES और तो कुछ भी नहीं है कि स्विंग ये ब्लू ब्लैक जो बोलता हूँ वही वाला वो लगाना वो भी लगाने हैं.
Finally, one direction it made to the downside. Touched S2, S2 again, S2, S2. किसी नंबर पे जाकर क्लिक राइट क्लिक नहीं है आपने अपना चार्ट पे डाउन किया चार्ट पे डाउन किया सुनता नहीं है यहाँ पे सब गप्पे We have a higher low, 30-20 higher low. Let's see. No, it's just a, because the market again S2, testing S2. over here, take a mouse, bring it down here with this price. Yeah. Right click. That's it. The market comes to that thing. It's going to pick it up. Now, in order to drag it up and down, go to LMD. Wait for LMD. Click it once. No, once. You see it's a hand. Turn it to a hand. Nasdaq is fighting. हाँ तो राइट क्लिक डुप्लीकेट ऊपर कलर चेंज करें ऊपर रेड कलर है ना वो हर एक का एक कलर है हर एक चार्ट का एक कलर है वो राइट साइड पे रेड है उसका कलर चेंज करें तो उसके साथ राइट कलर कर दें Mid band worked, no problem, 30-20. अब यहाँ हायर लो लग जाए ना फिर होम पर जाएंगे यहाँ हायर लो लग जाए तो यहाँ पे जो कलर है इसको $30-20 mid band 15-10 was okay. और वो बहुत मिड बैंड आते हैं 23 घंटे 1000 मिड बैंड आता है पूरे बिटवीन एवरी मार्केट Nasdaq पे तो इतना
आपके पूरे दिन का टारगेट है 2 पॉइंट, पूरे दिन का। हाँ, जो आपके साथ कमिटमेंट हुई हुई है, पूरे दिन में 2 लेने हैं। $100 से स्टार्ट करना है सर, क्योंकि होगा ये, आप 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 8 वापस कर देंगे और खत्म। तो 2 के बाद थोड़ा सेटअप्स देख के। All right, quickly I will explain SRES in about 2 minutes, 3 minutes, 11:30 I'll explain SRES. It works with every market, every chart, every symbol, every stock, everything. Black, blue guys. दोनों साइड पे black, blue. अब अप जाएगा, लेकिन 2 लोअर हाई आ गया, तो अब पहला हायर लो आया है, तो अब यहां से इसने ऊपर जाना है। So now we have black, blue guys. Be ready. Be ready. Done on 15:10. And it should shoot up now. Let me, black candle didn't make, not yet. Let's see. It gave me on 15:10 2 points, not 30-20 yet. 30-20 it didn't give me anything at all, but still my stop loss is still active. दे रही है आपको पॉइंट, अभी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। जी सर, बसाम सर की हाल चाल ठीक ठाक सर, बड़ा गर्म मामला चलता पिया है। बस सर ਇੱਥੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Nasdaq ਨਹੀਂ S&P ਸਰ, S&P Nasdaq ਤੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ कर गए ना 2 एरिया में। हाँ सारे हो गए, एरियाज हो गए। अच्छा, मैं सर आधा घंटा 12 बजे शुरू करते हैं। नहीं मतलब हमें 12 बजे आना, आधे घंटे पर, नो प्रॉब्लम। ये SRES वाली स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन वाली, हाँ मैं करने लगा। हाँ ले लें, इट्स अप टू यू, दिस विल इवेंचुअली, दिस विल हेल्प यू आउट। कोई बात नहीं, आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 2 मिनट ले लें, नो प्रॉब्लम सर, एनी टाइम ये आ जाए, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना है। ये कॉन्सेप्ट डैनियल के लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है, 1 घंटा 30 मिनट के अंदर। जो पहली वीडियो है ना, उसके अंदर ये सारा पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं नया ला रहा हूँ। हाँ नहीं मैं प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा ना आपको कि है क्या वो।
सर आज आपकी ब्रीफिंग हुई भी आज हाँ मैं आपको SRES दिखाऊंगा पूरा। बस वही चीज आज बैठा है। SRES के ट्रेड आज 2 स्टॉप लॉस 30-20 के लगे, कोई बात नहीं, it's okay। दो stop loss लेके। 2 स्टॉप, लेकिन 15-10 वाले में मैं था, इस वाले में तो मैं 30-20 कर रहा हूँ। आई नो, लेकिन वो मुझे असल में उधर में नजर आ गया ना, और दोनों में आ गया एक ही वक्त पे, तो एनीवे नो प्रॉब्लम। जो आप वीडियो कह रहे थे ना, जो मेरा सुपर है 4 ही वीडियो आती है। नहीं आप 6 कह रहे हो। हाँ लॉग इन इधर करें, इधर नो प्रॉब्लम। मैंने वॉच तो कर ली पर फिर भूल जाता हूँ, समझ नहीं आती क्या होता है। 2 3 4 5 दफा प्रैक्टिस। अब जैसे ये मैंने कर लिया ना, हाँ लॉग इन, नीचे जाएं, नीचे जाएं, ये ग्रीन पे क्लिक करें, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वीडियोस, इस पे क्लिक करें ग्रीन लिंक पे, ठीक है। नीचे आए, देखें पहले 4 हिंदी की है, 4 इंग्लिश की है, ठीक है। आए हाँ आए ये लिखा है कि इंग्लिश वीडियो मैसेलेनियस टॉपिक 5वीं वीडियो, ये वाली, ये लिखा है, ये क्लिक हियर टू वॉच द वीडियो नंबर 5। अगली वीडियो स्टार्ट हो जाती है। नहीं मैं दिखा रहा हूँ ना, ये 5वीं हो गई। अच्छा दोबारा जाएं, नीचे आए, ये लिखा है ये वीडियो, हाउ टू स्टार्ट निंजा ट्रेडर, हाउ टू यूज। नो प्रॉब्लम सर, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। This is for us, sir. If you like to watch, this is the concept you will be using for rest of your life. But this is for us. If you like to sit, no problem. But this is a stake. Yeah, but for day one, it may go like this, but don't worry. Like eventually, like today, your job today was just not make money. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. That was day 2. Tomorrow I'll do the same thing. I'll ask you, where do you, tomorrow आपसे quiz लूंगा ना, पूछूंगा कि ये करंट लाइट है, अब मुझे बताएं, ये अभी पूछ लेता हूँ, आपका सेल लिमिट कहाँ लगेगा? चले मैं एक सेकंड एक लिखता हूँ, 1 2 3 4, मुझे ये बताएं सेल लिमिट कहाँ लगेगा? बिल्कुल सही है। अच्छा बाय स्टॉप कहाँ लगेगा? बिल्कुल सही है। सेल बाय लिमिट, ठीक है, और सेल स्टॉप 4, ठीक है। ये चीज अगर आप सीख जाओ कि कहाँ एंट्री लेनी है, ये आपकी एसेंस, आपने यही करना है। बाकी तो हम बता रहे हैं ना कि कहाँ पर एंट्रीज आएंगी, तो नो प्रॉब्लम, वो आ जाए तो फिर मैं अभी इसको, तो एवरी बेशक 23 घंटे शाम को इजी है। नैस्डैक खोल ली, जरा तेज चलती है, एनक्यू वाली मार्केट नैस्डैक है। मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ इवनिंग में कौन सा ट्रेड करना है, क्योंकि मॉर्निंग में ये ईएस बैठे रहेंगे, व्हाइट लाइन नहीं मूव होगी, इतनी स्लो चलती है। कल तो वैसे ईएस भी मूव हो रही थी, तो
you guys can go into your instrument पे click करें. So instrument जहाँ लिखा है ना top पे, वो ऊपर लिखा चार्ट के ऊपर साथ instrument. If you guys watch the video, it will show you where the instruments are. Instrument, ठीक है, और वहां इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहे हैं. कल की वीडियो में था, नहीं देखा ना? अच्छा, नो प्रॉब्लम. ये ऊपर यहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ ऊपर वो जहाँ ES लिखा हुआ है आपके चार्ट पे, यहाँ नहीं नजर आ रहा आपके चार्ट पे. मैं उस एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ. ES लिखा हुआ है जहाँ ES मार्च, हाँ नहीं, जहाँ ES लिखा हुआ है, ठीक है. अब आप वहां नीचे आएंगे, लिखा होगा फ्यूचर्स. अब उसके सामने लिखा होगा NQ. NQ stands for Nasdaq. NQ March 25. Yes. अब ये मार्केट है Nasdaq की मार्केट. शाम के वक्त ये चलती है जरा स्मूथ. सुबह के वक्त आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, इतनी तेज होती है. ये हजार पॉइंट मूव हो जाती है एक दिन में, और ये 1000 में कुछ नहीं, 1000 भी नहीं, 20 हजार डॉलर सिंगल डे में मूव हो जाती है, एक अगर लॉट लिया हो. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इवनिंग में ये प्रैक्टिस करनी हो तो नैस्डैक में आ जाएं. थ्योरी यही चलेगी, SRES, मिड बैंड, एरिया, सारी चीजें सेम है. सो let me write these types of trades. Beginners will not be using this at all. These are called area trades. So there are 9 types. I will only list maybe 4 because you will get confused between how they all work. So number 1 is areas. Number 2, favorite, SRE equals S. So SRE equals S, that's a type of a trade. Third is the one you've been taught, is the mid-band or gap. It actually is pretty much the same. So, and of course, I'll list them just so you know. There's a trade called Fibonacci boxes. There's a trade called RSI, trade called divergence, I think we can take position trade, but these are good enough. Actually, I will. So these are some of the common type of trades that I normally talk about in the morning when I'm watching the market. Primarily, you will be seeing me saying over and over, R1 is here, R2 is here, S1 is here, S2 is there, S3 is there. So that's primarily I'll be walking, like this is my morning routine until 11 o'clock. Hey guys, price is in S3, price is in S2. So at the beginning, you will be shouting, should I buy or should I sell? That's why beginners, I ask you, don't do this trade with me. Because people who are watching it, they know what to do at S3. They know what to do at R2 or R3. Because is it a support? Is it a resistance? So it's a bit of an advanced topic. But if you were to ask, somebody was to ask you the issue of success. So if anybody says, all right, you are using an algorithm to predict the market, how accurate is the algorithm? So of course, people say, okay, I trade, how is your accuracy? So every single trade in the world begins with 50%. Just remember that. Every trade begins with 50%. You can bring me a blind person or a chicken, and I can put just long and short there. It's 50%. So they can close their eyes and hit buy, or they can close your eye and hit sell. So they're correct 50%. Our job is to make it 60, 70, 76, 80, 85. The higher it is, what does that mean? Every trade you take on a method
has to give a result. I never say 100% because there's nothing as 100%. So if you took area trades with me for last 3 years, 9 out of 10 trades are good. 8.5 out of 10 trades are good, meaning the accuracy on area trade is the highest. So what does that mean? If price goes to S3 and you did a long there, 9 out of 10 times you will be successful, meaning you will make there 2 points, 3.4 points. I'm not saying you're going to make thousands of dollars, but the written guarantee you guys get is 2 points. That S3 should give you at least minimum 2 to 3 points. R3 should give you. So when he says in the morning, hit and run, that means from the area comes, you enter, you exit. Take your 2 points through. So that's, we have a proven formula that our areas work 90% of the time. Every time you take a trade, rarely you will go against it. So next type of a trade is called a swing retrace extension. This has been taught to you on day one. First Saturday, you all came, whether you just joined now, 15 years ago. It hasn't changed. It stands for, S stands for swing, R stands for retrace, E stands for extension. Swing retraced extension. If you want to go and watch how Daniel teaches it, video number 1, fast forward to 1 hour and 30 minutes, the lecture is there. He starts to do like this. So this is where the full video is there about lower highs, higher highs. Every single thing is there about. So what you guys missed quickly, there are 9 or 10 types of trades with this software you could do. Because somebody is very expert at RSI, relative strength index, overbought, oversold. Somebody cares about Fibonacci boxes. Somebody cares about midband, retrace extension, area. So I'm not going to list all. They're all listed on our super areas, all the type. But every single one of them has a different approach to it. So you want to go to a destination from point A to B. Many ways to go there. We will arrive at the same answer. Which method you will pick is important. So all of you have been taught one method in your classes. That's called midband, which means red to go down, green to go up. That's it. So I'll cover midband first because then I'll cover again quickly area for you. What is midband rule? You have to know midband. You would normally take this entry on 1510 because in a slow market, you take 1510. You have to just check. I check for 3 or 4 conditions. Number 1, if I want to go long, so my first condition is it green? Is it green first? Before I just, yes. Long means buy. Long, long, bullish, buy, all those terms that Daniel. So long means buy, that I want to buy something, right? Buy limit orders. Number 2, my 30-20 green. So background color on the both charts, if they're green, your probability is higher. Number 3. Price must retrace from higher high. So what does this mean? Let me explain. Now the chart, the color changes to green. It will write higher high here. This is your midband going. So what did he teach you in the class? You have to buy at every higher low, right? So the higher low will come at a midband right here. So this is your buy limit. So the price, the white line is around here. You will sit at the midband. You will do a buy limit and you will buy towards the up. So if the price is not coming from higher high, your probability is less. It's not 0. Again, everything is 50.
But what we want to do is the highest probability to make sure. So these are the at least minimum 3 conditions, minimum. If you like, you can add 2 more conditions. Number 1, I'll put a dot here because some users will check for large triggers. You know the twisting line that's going? If they should be green. If they're not green, your probability will go down slightly. And the fifth one, which I use it, no diversion line. That line will get confirmed at a black candle. So if you have a divergence line, skip that midband because it can still pass. It can still touch the midband and go up, but that divergence line is kind of an alert that my trend is about to change. Yeah. So pick up any chart. Right now you have a divergence line on 1510 to the upside. This white line is called a divergence line. Right. So this is a so if you were sitting at that midband, you saw it, be ready that I may cross into green. Not 100%. Look, 1 and twice it failed, but first time it failed, second time it changed color. So that divergence line is an alert that, hey, I may change my color to the other. This is the midband condition. You said large triggers. Yes. You said 2 green lines. Those are the one twisting together. So there is a midline and then So this ये देखिए ये वाली ये 2 green जा रही हैं. right. Yeah. So these are called they're not the full green. One is lime green, one is green. Midman is the center line. Then there's 2 more lines called large triggers. That's your chapter 3 inside your thing. So if you have these conditions, you are probably going to नहीं और ये बस ये 4 ही है. देखें उसके बाद भी फेल हो सकता है. ऐसी कोई नहीं है कि आपने ये 4 देखी, ये 4 ठीक थी, आपने मिड बैंड लिया वो तोड़ गया. अब होता यह है कि मेरी आय पता कहाँ रहती है 30-20 पे ज्यादा. अगर 30-20 एक्सट्रीम ओवरबॉट हो गया वो RSI वो फिर ना ये मिड बैंड तोड़ देगा क्योंकि 30-20 का मिड बैंड फिर आ जाता है. हाँ वो बिल्कुल ना लंबी लाइन चलनी शुरू हो जाती है. सो वो 30 अगर आपके पास so please try to attempt the first midband. That's the highest probability. So this is how it will work. So let me do a 30-20 and let me show you what will happen on 1510. Both are green, right? So आपने कहा ना कौन सा midband शायद ना चले. So 30-20 is like this, 1510 is like this. Both are heading towards up. So it will touch a mid. So let's do this way. Midband up, midband down, midband up, midband down. Now you will see, all right, 1, 2, 3, 4 time price has touched the midband. Now it's time for the bigger to take it from a swing. It has to take a retrace. By now, you will see 30-20 is starting to get like overbought. You see the red and green lines at the bottom? It's called the Relative Strength Index. That stands for RSI. Relative Strength Index. So that line, if it has gone on overbought, I will skip 1510. I will go to 30-20 midband. Right? So it's a bit better. But so, you know, sometime I've seen 6 midbands work. Every higher low, lower high, you buy, you buy, you buy. Daniel says, I don't care. I keep buying 1510 until it changes colors, right? So these are the truly I am only watching. Is my 1510 green? Yes. Is my 30-20 green? Yes. Is my price coming from a higher high? Yes. 3 are done. Large triggers, green. Some care, some don't care. And no divergence lines. Some care, some don't care. Because sometimes there is a divergence line, still touches midband, goes up. But if you have multiple divergence lines, it does. Look, there's a divergence line just came on to the down, but that midband worked, right? So it failed. So that divergence doesn't have to work every time.
You had twice at the bottom, and now you have almost going to be twice here. Let it make a mid-band. Let's see if it makes a black candle. Give me 1 second. Didn't make it. No divergence. Again, touching mid-band, trying to go back up. So if you are green on both, keep buying. If you red on both, keep selling. But at least, please, at minimum, these three conditions must be matched. My 15-10 green, my 30-20 green, price must pull from a higher high. If you are trading like me today on 30-20, you don't care about 15-10. I'm not caring. So I'm not looking down. But when I am trading at 15-10, I'm looking up just to show. So this is the mid-band trade. And of course, that mid-band trade has been taught to you in every video. Like all my videos are. So this is the most common one that we teach you. Because what the idea is, if you take 10 trades, 7 of them will go in your favor if you stick to this. So when I sat today, if you just go back to 9:30, you can go back and see, hey, look how many times mid-band worked today. Like right now, you have at least the last three mid-bands to the upside worked. Last two. So every time you will take a mid-band, there's a possibility that if you trade, the first mid-band that worked was at 9 o'clock. I remember that it came. So 9 o'clock mid-band worked. So this is your mid-band trade over and over and over. So in a mid-band trade, you're only doing buy limit, sell limit. You're not doing anything else. Buy limit, sell limit, buy limit, sell limit, sell limit, mid-band to go down, buy limit, mid-band to go up, right? So there's no buy, stop, sell, stop here. Got it? Good. By the way, all of this is recorded. You guys can reference that on our channel online. Thousands of hours of value. Sir, आज मेरा ख्याल है टेबल पे सिर्फ वैल्यू एरिया का टॉप रह गया, बस मैं एक ही नंबर रह गया, बाकी तो सारे खत्म हो गए. अभी भी एक्सपेक्टेड लो पे ले गए, आज भी ले गए यार. नहीं 55 तक तो आ गया ना, नाइट तोड़ दिया ना, नाइट तोड़ दी. अच्छा सर मैं पीछे 3 डाइवर्जन देख चुका हूँ. हाँ 30-20 15-30 मिनट डाइवर्जन, क्योंकि 57 पिछला था ना, तो 55 पे है. Alright, now this is one of those trades. Now remember I was gonna write 9 types. Every trade has a frequency. Frequency means if you take a black candle trade, just writing the word, that's happening maybe 500 times in a day from 9 to 5. Like black candle. There's a trade called black candle. But that is happening too often. You won't be able to keep it up. Then there's a frequency of there's a frequency called low of the bar, top of the bar. That is the number one frequency. Like that will happen maybe 5,000 times in a day. I don't touch that at all, because you will say, hey, where do I enter? Where do I exit? So there is this trade called swing retraced extension. Still has 70% chances. We had 2 stop losses today, 2 on 30-20. What does this mean? You've been taught the following. If the price is going down, let's say this is a swing. What it will be written here, lower low. When the price goes back up, what is written here? Lower high, lower low, lower high. Let me write here, retrace. So you have a swing. Every swing has a retrace. Okay? Let me go back over again. Swing, retraced extension. You have a swing. You have a retrace. Now, let's pick some numbers here. I'm going to write 5, 5, 5, 7.
There's a reason I wrote this. Night session low. So what happened was this was a swing, right? You have a retrace, maybe it's a mid band to the downside, it touches there and comes down. When it breaks this number, it is extending. So the word is extension. So it will make another lower low. So in this case, we will write a number 5555 because that's what happened today. Goes back up, makes a lower low, goes back up, makes another lower high. Now, what is the rule? SRE equals, so if E, yes, E becomes S. In a wording, what I'm trying to say is swing, retrace, extension. If there is an extension, extension will be called swing now. The name changes. We are only working with three things in life: swing, retrace, extension. Either you are in a swing, either you are in a retrace, or you are in an extension. That's it. There's no other way around. So, look, you have a swing to the downside. You have a retrace. Do you have an extension? Yes, you have an extension. So this is, if you have an extension, what would E become? The new swing. So now this becomes your S. Now we have a new S because the three moves are going, repeating over and over. It's not like you only watch for the last three moves. And by looking at the chart, you can look at, right now I'm in a swing to the downside. It's a huge swing. So किधर गई जी price? दोबारा S2 पे चली. S2 पे चली जी. S2 पे गई है. S2 पे. So every time you have an extension, that means that extension is now called a swing. Okay. Now, if this is a swing, what does this become? Retrace. Okay, let's say price goes and it doesn't break 5555, but it say 5553. Do we have an extension? No. So the thing is, if you have no extension, your retrace is the swing. It just changes it to a different one. In this case, it will make a higher low here. Do you? Mhm. It's a 557 and 550. नहीं जीरो नहीं है. 5555. मैं दोबारा लिखता हूँ एक से. यहाँ लिखता हूँ 5555. यहाँ लिखूंगा 5557. ये 555 लोअर है ना? नो मैं ये कह रहा हूँ ये जो स्विंग ये आई है ना, ये एक्सटेंशन है. ये पिछली मूव थी ना, इसको एक्सटेंड कर दिया ना उसने, तो मेरा ट्रेंड जा रही है ना, नीचे ही जा रहा है ना, नीचे तुम्हारी एक्सटेंशन कंटिन्यू हो रही है. बहुत स्पीड से जा रही है जी. Swing, retrace, extension. If you have an extension, extension is a swing. If you don't have an extension, that retrace becomes your swing. So now you, in this case, this is S, right? Now this becomes what? Retrace, right? So generally you will have an extension to the upside now. So what I meant by swing, retrace, extension is what we were watching whole day on 30-20 chart. Whenever there is no extension, we were going long after on the previous move. That's all we were doing. So now let me show you on the graph what it look like, because it will make more sense if you watch the graph.
Go on your 30-20 chart and give me a second. Let me pull a time where it actually. Okay, go at 10:04. 10:04, you will see this setup working. Exactly at 10:04 at 30-20 chart. It will make sense for you. Time. 10:04 time. थोड़ा सा पीछे चले जाएं, उसको बैक पे चले जाएं. Okay, no problem. I have more bars and I'll show you how to watch the chart with. आपका 10:49 है, no problem. मैं देखता. Not 10:04. It's too big. Okay. Right click. No. On 30-20. Right click on 30-20. Click on data series. Right click 30-20. Click data series. Okay. Where do you see number of bars? Data series. No, bars to load. Okay. Use what do you have written there? Make it 2000. So this is called back testing. What you are doing is you took a chart and you want to see history. So bars to load, data series, bars to load, it will be written 500. You can change it to 2000 and apply. So that will now let you go back. And let's go to 9 and 9:45, 9:46 time. Okay, let's change again and make it 3000 bars. So, because this is a good tool for you to study what has happened, because we do back testing, that's how we write the software, by looking. आपके पास दो ब्लैक के बाद ब्लू आ गया 30-20 में, दो ब्लैक के बाद ब्लू आ गया, बी रेडी देयर, और प्राइस है S2 से नीचे है दो ऑलमोस्ट. Sorry? No, फिर कंप्यूटर नहीं लोड होगा. Maybe 3000. 950 चलो आप 2500 बार कर दो, मेरा ख्याल है कि यार ठीक है. नाइन 45 पे जाएं जरा. ठीक है, 9:45 आ रहे ना, थोड़ा सा ऑर्डर लगा दूं. ब्लैक कैंडल फॉर्म हो रही है. नॉट येट, अभी नहीं फॉर्म में. ओके, एवरीबडी सीज दिस एट 9:45. एक्चुअली स्लाइटली थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं ताकि उसको आसान हो जाए आपको और समझना. So what do you have this higher high at 9:44? Everybody sees you guys have higher high at 9:44. So this is your swing. At 9:44, you have a higher high number, 56.24. It says higher high, that's your swing. Then you have your retrace, right?
Do you have an extension here? Yes. Look at after. Yes. After that, you have an extension. So you do have an extension. So what was our rule? Swing, retrace, extension. Extension becomes what? Swing. So now we have this as a swing. So I will call this easier in a mathematically. Swing 1, retrace, extension. You don't have you have an extension, so extension becomes your swing. Let's call it swing 2, just for math, because otherwise your mind will gonna say, we have a retrace. Okay. Do we have an extension? No, we don't have an extension. It did not break 5632, right? It must break 5632 to continue up, right? So this is your extension. If we have no extension, this becomes your swing, right? So पीछे सारा खत्म होता जा रहा है. We had extension. Extension became the swing. If this became swing, this became retrace, this became extension. There is no extension, so the previous one became my swing. I know I will lose everybody on here. Let's write it again. Swing, retraced, extension. Here, do we have extension? Yes. Yes. So E equals S. So I will call this now S. This becomes retrace. Yes. Do we have an extension here or not? No. No. So no E. So R becomes S. This becomes swing. This becomes retrace. Do we have an extension to the downside? We do, right? Swing, retrace, extension. Okay. Now look carefully what happened when I was saying the colors, as you will have this setup. You have a blue previous swing. You have a blue, or even these two. Just watch the last two swings. After two blues, if you get a first black, this is chances where the price is going to reverse. If you have no extension, price will go in the opposite direction. You have a higher high. You have a higher low. Do you have another higher high? No. So what I normally do, this is what I was selling. Guys, your setup is coming. Do your sell stop here. So do your sell stop here. I'm not, okay, because right now at a sell stop, I don't care if it goes up, it's not going to pick my order. So what I care about, if this becomes my extension, I want to be part of that extension. I want to be part of the extension to go up or part of the extension to go down. I see, if I put a sell stop here after my black candle, I don't care how high, I don't know this thing. I haven't seen it. But what I do know is this number I do know. You will have higher highs, and after a black candle will make a lower high. But after this black candle, I want to enter my short trade, not before. So just you have to be very careful on when to use buy limit, when to use a buy stop, when to use a sell limit, when to use a sell stop. So this is a trade, you will do a sell stop. So इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बिगिनर्स में सिर्फ बाय लिमिट सेल लिमिट पर रहें. वो मिड बैंड आसान है. प्राइस नीचे है बाय लिमिट कर दें, प्राइस ऊपर है सेल लिमिट कर. ये उन लोगों के लिए जो स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन देख रहे हैं, where to buy, where to sell in future. In this case, all I cared about, I want to be part of an extension. I have a swing, I have a retrace, I don't have an extension. Just take me, be part of it. Because now I'm very safe here. What's the worst could happen is my order is right here and this price continues to go up. It's okay, I didn't. The moment it makes a higher high, I will cancel this order. Because now I have an extension. So whenever you have no extension, you want to be part of that next extension. That's the math behind it. You were also talking about, after
So how does the black candle appear? On our 30-20 chart, it appears after 34 ticks. On our 15-10 chart, it appears after 19 ticks. There's a math behind it. Now, what is 19 ticks in ES? It's called 4.75 or 8.5. The number in gold, it's different. Gold will make it $1.9 or $3.4 because gold, each tick is $1, like 10 cents. So Nasdaq and these are okay. So when I say 4.75, I'm referring it to either ES or Nasdaq, or the 8.5 means 30-20. So what I normally do is I have a swing, I have a retrace. If I have no extension, it gives me plenty of time to start placing my orders that I want to be part of this extension. And this extension, everybody took a 952, and today everybody was done by 958. पहला ही ट्रेड जो आया वो हमारा स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन बन गया था. You guys clear on this? Or I can go over to make it make sense. Swing, retrace, extension. You don't have an extension, retrace becomes your extension becomes your swing. Swing, retrace, extension. And again, you have an extension. Yes, good. That's my swing now. If you don't have an extension, previous retrace becomes my. So you go back one move, either the current move or the previous move. हाँ जी बिल्कुल 100% सर. ये 5 6 3 0 2 5 minus 8.5 ब्लैक कैंडल वहां बन जाएगी और यहां से आप सेल स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ब्लैक कैंडल जब तक फॉर्म ना हो एंटर ना करो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि उसने ऊपर जाना है कि नहीं. अगर मैंने इसको देखे बगैर काउंट ना किया कि अगर ये और ऊपर चली गई तो मेरा नंबर बदल जाएगा. तो हमेशा आप देखेंगे सेटअप ये बन रहा होगा, ब्लू प्लस ब्लैक, मैं शॉर्ट में जाऊंगा. ब्लू प्लस ब्लैक, मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा. जब ब्लैक प्लस ब्लैक और उसके बाद ब्लू आया तो मैं लॉन्ग में जाऊंगा. ये कलर मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां कलर हमारे लिखे आते हैं इस कलर में. हायर हाई हायर लो लिखा आएगा. अभी और नीचे जा रही है जी, वो ले गए जी और दोबारा आज गिर गई खत्म. हाँ नहीं वो फिर टेस्ला ही तबाह कर रही है. शॉर्ट मीन सेल. तो आपके पास ब्लू के बाद ब्लैक आ जाए, दैट्स अ साइन कि मैंने नीचे जाना है. ब्लैक के बाद ब्लू आ जाए तो ये साइन है कि मेरे पास एक्सटेंशन टू द अपसाइड बननी है. हाँ जी हाँ कोई मसला नहीं. अगर ये जैसे हायर लो हायर हाई, अगर इसी तरह नीचे से शुरू हो हायर लो से हायर हाई जाए, वो फिर हमारा सेटअप नहीं है. सेटअप ये है सिर्फ हायर हाई हायर लो उसके बाद लोअर हाई. ये सेटअप नहीं, क्योंकि क्या हो सकता है वो लोअर लो से भी हायर हाई बना सकता है और हायर हायर से भी लोअर लो बना सकता है. तो मेरा वो सेटअप नहीं है ना. मेरा सेटअप ये है कि मेरे पास 2 ब्लू हो और 1 ब्लैक हो, 2 ब्लैक हो और 1 ब्लू. नहीं लोअर लो से बनाए हायर लो. यस, क्योंकि ये देखें लोअर लो से बनाया लोअर हाई, लेकिन आगे उसने एक्सटेंशन देता जा रहा है ना. तो अगर यहां पर ये 5 6 0 8 ना तोड़ता, हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे लो से हायर हाई चली जाए तो मेरा सेटअप नहीं है. मेरा सेटअप सर सिर्फ इस सर्कल में है. ये देखें, ये याद रखें. नहीं यहां तो कोई सेटअप नहीं. नहीं जब नहीं, मैं आपको सेटअप निकाल के दिखाता हूं. इसकी फोटो ले लें. हायर हाई हायर लो पहला, ये आपका सेटअप नहीं है तो प्लीज नहीं करें, आपका खराब होना ट्रेड. इसके अंदर जो 5
सॉरी 9:45 के आसपास का जो ट्रेड है उसमें ब्लू हाँ वो हमने, वो तो हम बाय कर रहे हैं, वो तो हम बाय कर रहे हैं ना, वो तो हम अप्लाई कर रहे हैं। वो तो हम ब्लू, सारे ब्लूज आ रहे हैं तो बाय कर रहे हैं, सारे ब्लैक्स आ रहे हैं तो हम सेल करते जा रहे हैं। जब थोड़ी सी भी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई उसके आपके पैटर्न के अंदर, तो हमें पता लग गया कि इसने ऊपर जी इधर से इस नंबर से LH, हाँ यहाँ से सेल स्टॉप करेंगे ना, ये 56 में, क्योंकि मैं ES में हूँ, शायद आप MES में ना हो, तो MES में फर्क होता है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है ना। तो नो अभी कैसे वो तो चलता है ऊपर गई यहाँ पे कोई ट्रेड ले नहीं सकते हम, झंडा है यहाँ से ऊपर गई हाई फिर से बना दिया, ये आपका ट्रेड हो गया नीचे, ऊपर की तरफ जा रही है, ऑल ऑफ अ सडन लोअर हाई बना दिया, ट्रेंड ग्रीन नहीं है, तो यू डोंट हैव टू लुक एट द बैकग्राउंड नहीं अभी हो गया, that's all there is, टाइम लगेगा। यहाँ पे अभी करंट जो चल रहा है उसके अंदर 12:07 से 12:10 के बीच में वो ब्लैक कैंडल फिर दोबारा वापस मोस्टली यहाँ से ट्रेड यहाँ तक होता है। अच्छा नहीं वो स्विंग होता नीचे जाता है, ओके तो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग। I think we just lost our internet here. You told about blue black, most likely will go short. Yes, But what about if it's always black or always blue? then you stay in the trend. Always black short, always blue long, Okay. always blue and long, always black and short. I got it. Magenta background. So these are some of the pointers, but it's not guaranteed, but it's some of the pointers. Some of the highest probability high करनी है। And of course, is that like background color? Yes. इस ट्रेड में बैकग्राउंड कलर का कोई फर्क नहीं है, स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन में बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ मैं देख रहा हूँ स्विंग रिट्रेस, बैकग्राउंड कलर का इंपॉर्टेंट होता है मिड बैंड ट्रेड में, कि दोनों ग्रीन हो या दोनों रेड हो, लोअर लो चल रहा है तो मेरे साथ साथ चलता है। हाँ चार यस, तीसरा आपका जो है वो आपने तीसरा प्राइस रिट्रेस मंगाया है, चौथा में लेके जो पहली रिवर्सल, यस पहला जो मिड बैंड आएगा हायर पॉसिबिलिटी है कि वो यस रिट्रेस हो गए, यस वो एक्सटेंशन बनाएगा, स्विंग रिट्रेस करके एक्सटेंशन बनाएगा, पहला रिट्रेस सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। ये इसको यस करके सेव करो, यस करते हैं, हमने वो MES बनाया Then you have a black, and this one black, बंद नहीं हो रहा है, नो ट्रेड में बंद नहीं हो रहा है। ये तो इसके अंदर आप ट्रेड करते हो आपके ट्रांजैक्शन फीस तो नहीं, ट्रांजैक्शन में कमीशन लगता है $6 पर ट्रेड। हाँ नहीं एक पूरे राउंड ट्रिप पे, पूरे राउंड पे
कुछ फंडेड कंपनी में है, कुछ पे नहीं है, हर पे, लेकिन जनरली होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एनी डे। की मसला क्या है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बस क्लाउड ड्राइव बंद कर दें, दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल। अभी तो लोग जरूरत नहीं है, हम लोग तो इसमें ये ना पहले डेमो के अंदर आपने बताया था कि you can also look up the setup account this way as soon as you pick the trade, it will automatically put your stop loss. Yeah, it's called an ATM. Okay. But in the demo we don't have to worry about that. Right? No, you're not really, because you were just practicing buy, sell, buy, sell, buy, Exactly. sell. That's what I'm focusing on. But we would want to learn. Yes, eventually. So because like once we go for the like of this thing, right? Like a PA account. Exactly. We will work with an ATM to set up your stop loss, set up your TPs. Thank you. आपने हाँ डिलीट कर दें। हाँ। अगर मैं डिलीट कर दूं तो वन ड्राइव में वो डेटा तो रहेगा, वो तो खत्म नहीं होगा। अभी जैसे सबको दिखा रहा है, I can still see those वन ड्राइव के ऊपर जो लगा होता है, तो ये है इसके अंदर अभी सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन मैं नया एंटर करता हूँ नहीं, लेकिन वन ड्राइव डिसेबल किया हुआ, एनेबल नहीं किया ना, नहीं तो ये तो अभी तो बंद किया तो वो सारा अपना हाँ जी। वन ड्राइव कल इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर के लिए आई डिड इंस्टॉल Yeah. So if I want to install the OneDrive, is it advised? I don't recommend on this Ninja with OneDrive. Too many issues. They crash a lot. Can I do this thing? Like, let's say for example, on the weekend we are trading, right? So like not like every week, but let's say like once a month, you install the OneDrive, backup everything, and then uninstall it. There's no reason to back up. There's nothing that will get lost. I have got like a couple of times that problem with the laptop, like it got crashed. No, it's okay. We'll reinstall it. No, I know you will, but all the other data on the laptop, right? The other data, you should save it on thumb drives if you can. Because I use strictly for trading. I don't use anything. Yeah, that's fine. So if you can save on external drive, maybe. Generally, it's not a problem. I'm thinking, how will I make sure, because for my work, I need the laptop. That's fine. No, keep using. But I'm saying, if there is a OneDrive issue, sometime it causes problem. Sometime. Because yesterday I deleted the OneDrive. Mm-hmm. Because software was giving problem. Yes. But yeah, that's what I say. Even if I do not every day basis, but once a month. That's fine. It can pick up. Then don't load Ninja then. Okay. And then don't load Ninja. हाँ जी. हाँ जी, Ninja Trader. ये नहीं सर, login करें. Super areas के अंदर login करें. Any desk दीजिएगा. One 495 282. Ninja, आपका ऑन है एनी डेस्क? 1495. अच्छा अब आया. हाँ जी, अब जाएं नीचे ग्रीन पट्टी पे क्लिक करें. ग्रीन पट्टी पे क्लिक करें. हाँ जी, उसके अंदर सारी वीडियोस इस पेज के अंदर है.
नहीं, उसके नीचे है वीडियो, मेरी वाली निंजा ट्रेडर वाली है, ये नीचे आए, नीचे आए, ये वाली, ये सबसे ऊपर जो है, ओके। ऊपर चलेगी, नहीं लोअर हाई के अब लगा ना मेरा, लोअर हाई के बाद अच्छा लगा, LH, तो HL पे ऊपर ही जाना था ना हमने। टच करके वो नीचे आ गया ना। अच्छा, नहीं लेकिन मुझे तो उसने 10 पॉइंट दिखाए हैं, देखें लोअर लो लगा, फिर उसके बाद लगा लोअर हाई, फिर हमने हायर लो का वेट करना था ना। हाँ हाँ, अच्छा नहीं वो 8.5 नहीं ना आया, क्योंकि वो 8.25 से चला गया। अच्छा, आपका ऑर्डर पिक हुआ, फिर ऊपर गए, थोड़ा 0.25 गया ना, नीचे आगे बाद नहीं मैं ये देखिए, यहाँ से आपने बाय करना था, बाय किया तो वो 8.5 ऐड कर लिया। 8 पॉइंट, लेकिन यहाँ उसने 10.5 से ज्यादा नहीं दिया आपको, आपको कितने दिए, ये नंबर क्या लिखा रहा है? मेरा तो लॉस हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट दिए उसने, दो का तो मेरी टिपी है। अच्छा 2 उसने नहीं लगाए, क्योंकि मैं MES पे पढ़ा हूँ। वो मैक्सिमम गया 0.5। अच्छा अच्छा, कहने मतलब वो उसमें वही ये वाली नो थी है, उसको वापस आ गया। तो ये जो ट्रेनिंग की वीडियो 4 है हाँ ये वाला मेरे ऊपर जो 4-5 वीडियो उनकी हैं, जो YouTube वाली है वो मेरी है। अच्छा, वो मैं कल देख रहा था, वो सुपर एरिया का वो कोई आपने वो बनाया हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट सुपर एरिया, हाँ इज दैट सेम और जैसे थोड़ी थोड़ी क्लिप्स दे देता हूँ, और कुछ में कुछ भी नहीं। फिर डिस्कनेक्ट हो गया जी आपका, एक्सेप्ट कीजिएगा। अब असल में 12 बज गए, मार्केट ऑल ओवर द प्लेस चलनी शुरू हो गई। आपका कंप्यूटर अभी भी ठीक नहीं है, उसमें ड्राइवर्स नहीं चल रहे, मैं ओके नहीं क्योंकि मैं नहीं मैं देख नहीं पा रहा, एक सेकंड चलो ये माउस दीजिएगा बैठे, क्योंकि मुझे उधर से एनी डेस्क नहीं हो पा रहा। आपने लेजेंड डालना है ना इसमें, ठीक है ये नई लैपटॉप है, ओके इसको मैं बंद कर दूं, काफी प्रॉब्लम दे रहा है इसमें बहुत रेट्स। मैं इवनिंग टाइम में ऑन कर दी थी ना, स्क्रीन काफी टाइम ब्लैक हो जाता है। ओके नो लेजेंड्स का आपका यूजर नेम इंटरनेट आप बुलनॉक्स में लॉग इन करेंगी और लेजेंड्स में मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। बोनस 83% पे है, 83%, $30 का लगा हुआ। एपेक्स नहीं, एपेक्स 80% ही है, एपेक्स और है मैं देख रहा हूँ। यदि वो ट्रेड आप बोल रहे हो और वो आपको यही समझा रहे हैं कि जैसे वो एक्सटेंशन है ना, वो एक्सटेंशन बोल रहे हैं, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट तब एंटर होना है सारे, अब बाय में नहीं होना,
कल में जब जैसे 99 में चली गई उसके बाद हमने लॉन्ग करना वही पूछ रहे हैं ना टेंशन वो दूसरी टेंशन जो ब्लैक है आप सीधे पूछ रहे हो आरएससी वो इतने पॉइंट भी दे रही है ना निकलना भी है थोड़ा फिर वो आप हो जाएंगे आज 5 सेटअप बने सुबह 11 बजे तक, ये SRES वाले सारे सॉलिड। एक पहला स्टेप पहला बना 948 पे। अगर आप पीछे जाके देखें जिस तरह मैंने सर्कल किया है, ब्लू ब्लू के बाद ब्लैक आ जाए, ब्लैक ब्लैक के बाद ब्लू आ जाए, तो सर आपके वाले वीडियो कहाँ पे? यहाँ नीचे, एक सेकंड नीचे स्क्रॉल करें, नीचे जाएं, आए आज ये देखें ग्रीन पट्टी क्लिक करें, इसको अंदर जाएं, नीचे आए, नीचे आ जाए, ये सारी लगी हुई है आपकी 4 सेशंस, ठीक है। नीचे आए और आ जाए नीचे और आए, ये देखें हाउ टू स्टार्ट निंजा बिगिनर्स गाइड, यस यही है ये काम तो बस। नहीं नीचे सारी है, नीचे देखें सारी मेरी वीडियोस है, हाँ यस किधर गई है जी? हाँ जी 45 है ना इसका, है ना? हाँ कितना बनता है ये? ऑलमोस्ट $170 कैनेडियन, हाँ जी। मैं क्या कह सकता हूँ यार, चलो नो प्रॉब्लम, आई डोंट नो मैन, ठीक नो प्रॉब्लम, हाँ सिस्टम फॉलो करें, एरिया ट्रेड करें, मिड बैंड देख लें, पहला लेना होता है और $200 के बंद कर दें। आप भी तो 1700 पूरे दिन में लेना चाहिए, कितना बनाया अभी 1200 बना दिया है, तो अब यहाँ से लूज करेंगे, मेरा फॉल्ट है, तो फिर 1200 के बाद 1200 के बाद आप नहीं रुक रहे तो मैं क्या करूँगा? हाँ आप इस वक्त ट्रू गैम्बलर बन गए हो, क्योंकि 1200 के बाद क्यों नहीं रुक रहे यार? आ जाओ यार, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक दफा एनी डेस्क का नंबर दो और दीजिएगा।
एक दफा एनी डेस्क और दीजिएगा 14952 436 लो जी All right, guys, I'm going to shut the stream off. See you guys later. Enjoy. Take care. मैं बस सिस्टम रैप अप करके आता हूँ ताकि जस्ट क्लोजिंग इट डाउन So new users do have a session with Daniel too. If you really not getting what I'm saying, you can sit down with him and he'll teach you. No, not a problem. Just schedule some time and every day, every same. यानी उसका मेथड सेम, बस मेथड सेटअप का वेट कर लें. मैंने आज 11 से पहले 4 तो देखे और नहीं फेल हुआ यार. 11 से पहले 4 के 4 उन्होंने वो सबसे स्केर्ड थी, उन्होंने बिल्कुल ये ट्रेड मास्टर कर लिया. और ये नैस्डैक में शाम को आपको देना शुरू कर देता पॉइंट. 5 पॉइंट तो ले रहे हैं लोग. 5 पॉइंट नैस्डैक में बनते हैं यहाँ पर आपके $100 या $10. सो स्विंग रीट्रेस. इसको दोबारा रिकैप करना है. डैनियल की वीडियो नंबर 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा ट्रेड दिया गया है. और ऑफ कोर्स सारा मिड बैंड उसके अलावा. नो प्रॉब्लम. टेक केयर.